मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि इफ़ आई वांट टू एक्सपीरियंस हिप हॉप तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा. कराची में मुझे खस्ता और खालिस मुझे हिप हॉप नहीं मिलेगा. नो ऑफेंस टू एनीवन, कल्चर इज डिफरेंट. एवरीवन नोज यार क्या चल रहा है. द ट्रेजेडी वाज के पहली बार जब मैंने कैश टैग किया था ना कि ब्रो आई वाज वर्किंग अ जॉब दैट वाज पेइंग मी 50,000. अलग लेवल. मतलब मैं अंदर रूम के अंदर एंटर हुआ हूँ और साइफर्स हर जगह चल रहे हैं वहाँ पे लोग. Wait, we got to know. Obviously we क्या got to know यार, तो दोस्त है मेरा. क्या एक तो hosting है. We got to know मतलब like fuck I saw a story bro. Obviously. So like तो I still have text or Mikhail, Dwayne, you know, Kevin and all these like people. Oh shit, जो unknown crew EXE के members थे कि मैं उनको message कर रहा हूँ. I'm a big fan. Love your place. Love your. The connection they were building initially. I still have those conversations. Like there's this guy I know for like few years. उसका मेरे पास message आता है कि bro, do you know any Khudaish Gulzar? Crazy. कहता है I got a text from someone और ये by the reference to Khudaish Gulzar. Bro, मैं मतलब नकी अन्नास रॉकी हम उनका मजाक उड़ाते थे. Because being a b-boy and you were there, you know, b-boys are very ruthless, arrogant motherfuckers. No disrespect. मतलब उनके अंदर अलग सी टसल होती है कि भाई मैं b-boy हूँ, तुम आके मुझसे बात कर लो. समझ ये कि मैं सब कुछ हूँ. 11 बजे दुबई की फ्लाइट है और मैं 9 बजे इवेंट में अपना सूटकेस लेके खड़ा हुआ क्योंकि आई जस्ट वांट एक्सपीरियंस. गिग्स परफॉर्म कर रहा है, मैंने मसीगो को परफॉर्म करके देख लिया है. एसएप रॉकी मेरे सामने से चलते हुए जा रहा है. ब्रो मेरी फटके हाथ में आई हुई थी कि हो क्या रहा है. मैंने अम्मा को बोला, मैं दिल चाह रहा था मैं फोन करके अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मा छोड़ दो मैं नहीं आ रहा. ये वाला सीन था. पाकिस्तान में तो खैर नाचना तो हमारे खून में है ना. लाइक सुनने से ही तब भंगड़ा ड्रम लाइक करना मतलब नो वन कैन सिट लाइक वो हमारे अंदर है बिल्कुल है. तो द डांसिंग इन कराची एज फार एज आई नो और मुझे भी पता चला तो मैं पागल हो गया था. ओह शिट ये सीन है. तो उस टाइम से है. मैं अभी भी 10 साल से डांस कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल नॉट देयर येट वेयर आई वांट टू बी. तो hustle never stops. The hustle and the grind never stops. You keep moving. We keep it moving. एक चीज़ नहीं चली. एक चीज़ जो I would give a personal suggestion that people you don't have to be stuck at one place. अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर गुस्सा आ रहा होगा तो यू कैन सी इट इन माई वॉइस कि मैं तुम्हें साफ साफ बोल दूंगा. यू नो मी कि मैं एक मुंह फट आदमी हूँ एट पॉइंट्स, यू नो. तो इवन आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ विद आर्ट एज वेल. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं डांस भी गुस्से में करूँगा. दैट मैं एक बार मैच खेलने गया था एंड आई हैड दीज कलरफुल शूज़. मैं क्रिकेट मैच खेलने गया तो एट द एंड ऑफ इट अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो मेरा पूरा जूते का सोल था ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, आ रहा है, नज़र आ रहा है. ये पूरा निकल के अंदर की पैडिंग निकल के आई वॉज बेयर फीट. मेरे बल ऊपर से मेरे पास सिर्फ ये सोल था, मतलब ये जो ऊपर वाला सीधा, पर नीचे से आई वाज फुल बेयर फीट क्योंकि उसकी सारी सोल निकल गई थी. Hello everyone, welcome to EncycloMedia Hub. And today we have a new guest, obviously as promised. And this person belongs to the hip hop community. And he has been doing amazing work till now, alhamdulillah. I'm gonna show you who is that person. But Asad, would you like to tell us about him? Yeah, who is he? to be very honest, guys, he's been representing the b-boying culture. Obviously, everyone knows hip hop. We have categories and the typically b-boying stuff. So he's been representing for quite some time now in Pakistan. And the brainchild of hip hop jams in Pakistan. So let's announce. Let's have proper MC. Welcome to Ahle-E-Taishi. Assalamu alaikum, Jani. क्या हाल है भाई? Taishi, assalamu alaikum. तालियां. How are you, man? I'm good, man. I'm good. क्या चल रहा है bro? क्या चल रहा है? Bro अभी बस EncycloMedia Hub पे आए हुए हैं. बना हुआ है. How are you feeling right now? I'm feeling good, man. I'm feeling good. Excited to be here. Excited to just have this conversation. Share what I have done and all that shit. But yeah, मैं shit बोल सकता हूँ ना? हाँ. Go for it, bro. Go for it. But yeah, तो वही है. Thank you for having me, Ata. Thank you for having me. We are grateful, bro. It's good to have you here. और एक तुमने वक्त निकाला. Obviously, tough routine nowadays. बहुत टाइम से टोपी भी दे रहा था. But yeah, good things takes time, so we give it more. But we are doing it on good notes. So Khudaish, assalamu alaikum. So how's the journey being Khudaish to Taishi, aka Taishi? यार वहाँ से हाँ. Taishi Anarchy. ये Taishi meaning. What is the obviously a nickname we call it? वो उसका एक representation होती है. So what's the motivation choosing Taishi? So जब से ever since I was born, my birth name is Khudaish Gulzar. ठीक है.
लेकिन माई मॉम शी ऑलवेज यूज टू बी वो घर पे मुझे तैशी बुलाती थी. शी ऑलवेज हैड अ निकनेम फॉर मी तैशी. तो वो बचपन से सुनते आए थे कि तैशी तैशी. इट वाज टू दैट पॉइंट कि घर में मुझे सिर्फ तैशी बुलाते थे. एंड पीपल आउटसाइड यूज्ड टू नो मी बाय खुदैश. अब जब व्हेन यू स्टेप इनटू द हिप हॉप वर्ल्ड एंड स्पेशली बी बॉइंग वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद 2013 में. तो वो हुआ ये कि सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया कि सारा फॉर्म वॉर्म भर दिया एंड देयर वाज अ क्वेश्चन व्हाट्स योर बी बॉय नेम. और वो उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी उल्टी हो गई कि ओ शिट बी बॉय नेम क्या होता है, मैंने सोचा नहीं है एंड एवरीथिंग. सो मतलब इट टुक मी अ लॉन्ग वाइल के टू कम अप विद तैशी वाज 5 years after I got into the b-boying world. I went through Flowcipher, Diffusion और C-Rock और पता नहीं क्या अजीब से नाम. The scene started off when you choose the name. नहीं, हाँ later on कि वो एक मोमेंट मेरे लाइफ में ऐसा आया था कि dancing meant a lot to me. Sorry लंबा आंसर हो रहा है, but नहीं, it's fine. When I realized that dancing was the thing that I needed the most and this is my this is my purpose in life. वो वाला सीन होता है ना कि सब कुछ लोगों को पता चल जाता है कि यार यही चीज़ करनी है. So then that's when I was like, okay, the name should represent me. And what's a better name that my mom named me Taishi. So it was like, written in the stars kind of thing that it all fall into place. Okay, it's to that point right now. Okay, abhi bhi to this day. People don't know who Khudaish Gulzar is and they know who Taishi is. So interesting. मैंने पोस्ट डाला तो there's this guy I know for like few years. उसका मेरे पास मैसेज आता है कि bro do you know any Khudaish Gulzar? Crazy. कहता है I got a text from someone or by the reference to Khudaish Gulzar. Bro that happened as well. So yeah, Taishi. अम्मा ने नाम दिया था when I got to know the literal meaning. So it's a Japanese name that means ambitious. And Khudaish means brave king. So I'm an ambitious person. तो वही वाला सीन है. बादशाह तो नहीं हूँ, राजा तो नहीं हूँ, but hopefully man. So the name was decided. Let's start with the early journey from you, where you been starting from Act 1. You get inspired. What was your initial inspiration toward this? Doing this, you find your purpose right here. Dancing में. Yeah, वैसे b-boy inspiration कहाँ से start हुई? Like first ever the guy you ever watched and you're like, damn, I want to do this. Inspired कौन था बंदा के? कोई बंदा नहीं था inspiration में. It was in a way के I always liked dancing. I was an athletic person. I was, I was playing cricket. Yeah. मैंने cricket बहुत time तक खेली, club level तक cricket खेली. Yes, I used to be attacking fast bowler. Yeah. Crazy. Shit you not. तो 2012 तक मैंने cricket खेली है. But somewhere along that timeline, बचपन से I had a different love and attraction towards dancing. डांस करना नहीं आता था, लेकिन डांसना मुझे बहुत अच्छा लगता था. वो ये सीन था कि आई एम इन द मॉल्स विद माई फैमिली और गाना बज रहा है और मैं नाचने लग रहा हूँ तो अम्मा भाई बोल रहे हैं बेटा क्या कर रहे हो, हल्के हो जाओ, ईजी हो जाओ. और किसी की बर्थडे पार्टी है तो बस गाना चल रहा है और मैं बस नाच रहा हूँ. स्कूल की ईद विलन पार्टी, लाइक आई हैव अ क्लिप ऑफ मी डांसिंग इन द 5th grade विच इज़ लाइक 12, 13, 14 साल पुरानी वीडियो. मैं वाइट स्किन टाइट्स पैंट पहना हुआ हूँ, ब्लैक शर्ट है और मैं कॉफ़ी ग्राइंडर मार के हैंड स्टैंड बजा रहा हूँ. लोग पागल हो रहे हैं. ये वाला सीन. अच्छा ये कहाँ हो रहा है? किस जगह? ये मॉन्टेसरी कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल ब्रो, दैट वाज माय स्कूल गुलशन में. सो वो एक अलग कहानी है. बट वही इट वाजंट अंटिल 2013 के मुझे मौका मिला. सो देयर वर पीपल इन माय अपार्टमेंट जो डांस करते थे. मतलब उस टाइम पे 2000 इफ यू रिमेंबर 2011 का टाइम, फॉक शीशा कैफे जौहर में वहाँ पे डांस बैटल्स होती थी. स्मोकीना पे ये सारी डांस बैटल्स होती थी. तो आई वाज लिविंग इन जौहर और फॉग हमारे मतलब 2 मिनट रास्ते पे था. तो सारे जो ये ब्रेकर्स आ रहे होते थे. हाँ, डैनी वाज अ फेमस नेम बाय दैट टाइम. केमिस्ट्री क्रू वाज अप एंड रनिंग. सही है, केमिस्ट्री क्रू के 40 बंदे होते थे उस टाइम पे. तो हमारे अपार्टमेंट में कुछ 3-4 बॉयज थे जो वहाँ पे जाते थे. एंड दे वर समवॉट ब्रेक डांसर्स ना, ये वाला ब्रेकिंग. ये वाला rappers were joining there too. Popping a lot. बहुत सारे rappers भी आ रहे थे. Rappers नहीं थे bro उस time पे. That wasn't like I wasn't in the rap scene at that time. 2012 में. It was just dancing. वो मतलब introduction था. Yeah, बिल्कुल. I think अच्छा I met one of your अभी बल्कि introduction नहीं देना चाहूँगा अभी बाद में वो. चलो ठीक है सही है. लेकिन वो मुझे glimpse याद है कि मिलेनियम मॉल के अंदर सब जो है एक छोटा सा जैम हो रहा है. Crazy dance. हाँ they were like registering and वो jam scene dancing का it's way back then before even
2010-11 की बात हो रही है। Let's get on to it. मिलेनियम मॉल पे लोग बैटल हो रहे हैं, बहुत crazy. शीशा सीन ऑन होता था, सब कुछ, वहाँ पे सब वो कुछ। टाइम था बहुत अच्छा। Bro, culture ये था ना। फिर एक्मन आया and then फिर उसके लिए क्या सीन, किस तरह आप लोग तुम मतलब क्रूज वगैरह बने, क्या हुआ उस पे कुछ अच्छा, so I wasn't around Act 1 time. Okay. Act 1 time was the time where I was still, inspired in the apartment. मतलब Act 1 जब चल रहा था तो वो मेरे ज़िंदगी का वो फेज था कि जब डांसिंग नई इंट्रोड्यूस हुआ था डांसिंग से, और मैं और मेरे कुछ अपार्टमेंट के दोस्त थे who were inspired by the other apartment dancers जिन्होंने हमें बताया था डांसिंग का। तो हम लोग बस अपने कॉरिडोर, हमारे वो 9th अपार्टमेंट फ्लैट था, और कॉरिडोर था छोटा सा, लाइक इतना सा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, और उसमें बस हम लोग हैंड स्टैंड्स मारते थे। We used to be like कि सबसे ज़्यादा हैंड स्टैंड कौन कर सकता है, और हैंड स्टैंड मार के जल्दी से वन हैंड स्टैंड मार दिया, तो ये वाली चीज़ें चल रही थी। और स्टेप अप टू उस टाइम पे नई नई आई थी, यू गॉट सर्व पहले देखी हुई थी, स्टेप अप टू द स्ट्रीट्स आके तो हर कोई देख के पागल हो रहा था ना, सब लोग, हर किसी को मूव्स बनना था, हर किसी को ये, तो वो वाला टाइम भी था। मतलब स्टेप अप 2 मुझे याद है, और स्टेप अप 2 से भी पहले एक वीडियो थी यूट्यूब पे, एक्सट्रीम ब्रेक डांसिंग 2007, मतलब कंपाइलेशन वीडियो थी कि वो एयर फ्लेयर्स मार रहे हैं, विंडमिल मार रहे हैं, मैं अपने भाई को बोलता था कि एक दिन मैं ये करूँगा। नाइस। तो वो दिन आया, मैंने किया, तो इंस्पिरेशन वाज नेवर अ पर्सन, इट वाज जस्ट ऑलवेज इन मी टिल आई फाउंड के ओके दिस इज आई कैन लर्न इट एंड आई कैन डू दिस। तो वो वाला सीन था। सही है, सही। दैट साउंड्स ग्रेट। और फिर डिड यू, व्हाट्स योर, ऑब्वियसली इफ यू आर अ डांसर यू सपोज्ड टू बी लाइक obviously and you're part of the breaking, so you must be having a crew, like which crew you were working in and like you're practicing with them. कौन थे शुरू में, like initial crews? So जब like I'm a hip hop dancer now, breaking तो पहले जब I started with breaking right, हाँ। तो ब्रेकिंग में जो सबसे पहला क्रू दैट वाज आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू व्हिच इज अननोन क्रू। ठीक है, तो अननोन क्रू का जब मुझे पहले नाम पता चला, सो अननोन क्रू फॉर दोज हु नो इट्स ओजी B1 क्रू, वन ऑफ द फर्स्ट ब्रेकिंग क्रूज, पायनियर्स वगैरह, फ्री स्टाइल ब्लड भी था, EXD भी था, बट अननोन क्रू वाज देयर। लेकिन सीन ये होता है कि मैं बच्चा था, मुझे एक बंदे दोस्त ने बताया कि अननोन क्रू डिफेंस में आता है, बोलता है ये कैसे चुतियापे का नाम है अननोन क्रू, उनका नाम ही नहीं है कोई, ये कौन सा क्रू है, लाइक नो ब्रो द नेम इज अननोन क्रू। तो अननोन क्रू से आई वाज इंस्पायर्ड कि मैंने वीडियोस देखी, जो मैं इंटरनेशनल लोगों की वीडियोस देखता था, हेड स्पिन, वो सब मैं कराची में देख रहा हूँ। सो थ्रू अननोन क्रू आई गॉट टू नो EXD के थ्रू आई गॉट टू नो केमिस्ट्री क्रू। SDC wasn't around that time. SDC came like 1 year later or 2 years later, but even if they were there, I never knew about them. So I still have text or Mikhail, Dwayne, Kevin and all these people, oh shit, जो unknown crew EXD के members थे, कि मैं उनको message कर रहा हूँ, I'm a big fan, love your place, love your the connection they were building initially. I still have those conversations. Like एक सवाल है इसके दौरान, B-boy oh shit was it Sajjad or the other guy? No, that was Muiz. Sajjad was B-boy powerhouse. Where did he go? Muiz is working with Dwayne. So yeah, he's working and supporting the family. Chalo. Bless for him. Yeah, no, bless for him. So ये सीन था, and the first crew that I was part of, that I always wanted to be part of, unknown crew, because that was my inspiration. That's where I learned a lot of my things. Shout out unknown crew, shout out Kevin. इन लोगों ने मुझे breaking के बारे में बहुत सिखाया. Deepu, Muiz. Still to this day, the basics that they taught me is what I'm going with. Amazing. फिर उन्हीं के through I got to know EXD boys. सारे इनके साथ like they were doing crazy flips, crazy air moves, और I was like fuck man, crazy scene है. Hassan Sharif. Hassan Sharif were learning dancing from unknown crew, और वो EXD crew के साथ flips सीखता था. अच्छा, he was a dancer before. Yes, history, knowledge drop. Hassan Sharif. Nice. तो Hassan Sharif तो हम देखते हो content videos हरामी बना रहा होता है, पर वो लेकिन videography बहुत वो videos बना, वो हमारे साथ dancing करता था. So the first crew I was part of was a crew that we made with me, Daniel. There's this guy Saf. Okay. एक और नाज़ाबाद में डांसर था आसिफ, he used to go by the name of Asif Diary. And एक दो और बंदे थे, तो the crew was like soul element something crew, like वो random crew name generator से हमने नाम decide किया और वो रख लिया, but that wasn't official, मतलब वो बन गया था, but I was like कि मुझे ये नहीं करना, तो मैंने unknown crew को उसी टाइम में मैसेज कर दिया था कि भाई I wanna be a crew member. तो long story short, my first crew was unknown crew, like code unknown crew, like juniors जो भी था, next generation. After code unknown crew, it was Back Alley Monsters. जो unknown crew जब टूट गया था, तो me, Kevin and Nawaz made a crew, Back Alley Monsters. Back Alley Monsters के बाद आया what era specifically? This is कितना time हुआ? unknown crew I joined in 2014 या 2015.
एंड मेरे ज्वाइन होने के बाद कोई 1-1.5 साल बाद द क्रू एंडेड. Okay. आई गेस दिस वाज 2014. 15-16 में बैक एली मॉन्स्टर्स थोड़ा टाइम तक चला. बैक एली मॉन्स्टर्स के साथ साथ द टीम बनी थी जो हम ब्रेक द कार्निवल जीते थे, KU कार्निवल. हमने केमिस्ट्री क्रू के साथ हमने फाइनल हुआ था, वो जीते थे. द टीम के बाद इट जस्ट फेल आउट ऑफ प्लेस. तो गुड अमाउंट ऑफ 2016 लाइक 1-1.5 साल मैं आई वाज ट्रेनिंग सोलो एंड देन आई क्रिएटेड फ्रेश सोल्स. Fresh Souls was a crew that me, Ata, fucking Jasim, Maz the Machine Gun, Rebel. तो हमने एक crew बनाया था which didn't last long. सब उसकी गलती है, मजाक कर रहा हूँ. But Fresh Souls के बाद I took a break. I was like अब नहीं. So what you see me representing now, Anarchy, was a long time coming because एक मैं process देख रहा था, एक जनरेशनल कर्ज चल रहा था कि क्रूज टूट रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ सीन है. एक क्वेश्चन है तैशी, इस दौरान सवाल तो नहीं हुआ. बस जस्ट एडिशन, द ड्यूरेशन इट वाज पासिंग आउट. अब इस दौरान ब्रांड्स का और आवाम का क्या रिएक्शन रहा? अभी तो आई थिंक यहाँ तो अच्छा अनार्की पे, मतलब अनार्की बनने से पहले ये सब चीजें आपने कैसे विटनेस की कि कैसे लोग इसको एंगेज करे थे? उस टाइम पे आइडिया नहीं था. उस टाइम पे आइडिया नहीं था ब्रो. अच्छा, उस टाइम पे कुछ पता ही नहीं था कि now if you ask me, if you ask the Taishi 5 years ago that I would be in this place, no, not in EncycloMedia Hub, but I mean, this stage of in this stage of life, but of course that includes this as well. Yeah, bless you. Thank you so much. I had no idea this would happen because Anarchy का बनने का मकसद ये था, and the reason we chose the name Anarchy was the name speaks for itself. कि वही मैं बता रहा था कि Anarchy बनने से पहले I knew all these boys. मतलब नकी, अनस, रॉकी, हम उनका मजाक उड़ाते थे. Because being a B-boy and you were there, you know, B-boys are very ruthless, arrogant motherfuckers. No disrespect. मतलब उनके अंदर अलग सी टसल होती है कि भाई मैं B-boy हूँ, तुम आके मुझसे बात कर लो, समझ लो. ये कि मैं सब कुछ हूँ. और उस टाइम उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या पॉपिंग कर रहे हैं, और because we were jumping on our heads and fucking full acrobats. अलग सीन है ना. But I did an audition with them और इनसे मिला, we did jams together, we traveled together, we battled together और सारी चीज़ें साथ कर रहे थे. So our mindsets and mind was already connected. Our goal was the same. Same vibe थी कि हम लोग एक चीज़ पे, there were few things common in us. हमें कोरियोग्राफी वीडियोस बनानी है, हमें लोगों को प्रॉपरली डांस दिखाना है कि डांस होता है क्या है. हमें इस इंडस्ट्री को टैकल करना है कि देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन द इंडस्ट्री विद कोरियोग्राफर्स. लोग हिप हॉप डांस के नाम पे क्या क्या बेच रहे हैं, सब कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, और ये और बस कल्चर फैलाना है. सो दीज 3 थिंग्स वर कॉमन इन ऑल ऑफ अस. तो वी वर लाइक 8 सितंबर राइट आफ्टर माई बर्थडे पार्टी बैठे हुए थे. एंड वैसे टेक्निकली अनार्की 9 सितंबर को बना था, लेकिन मैंने बोला कि बस 8 सितंबर को बात हुई थी तो एक ही दिन में कर लेंगे. तो हम सब ने बात करी एंड वी वर लाइक लेट्स फकिंग डू इट. उससे पहले मोजी दैट यूज्ड टू गो बाय द नेम ऑफ यंग बॉय, वो हमें कब से बोलता था कि वो हमें कब से बोलता था कि अब तुम लोग अपना क्रू क्यों नहीं बना रहे. वो बोलता था जा भाई क्या क्रू, बिकॉज एवरीवन वाज थिंकिंग कि मैं जूनियर जैब्स का बंदा हूँ, नकी रॉकी, इन लोगों का अलग था. एनआरकी में जितने मेंबर्स हैं अभी एक्सेप्ट फॉर हमजा एंड शयान, ये सब जूनियर जैब्स थे एंड आई वाज द मेंबर अगेन. तो एनआरकी जब स्टार्ट हुआ तो ये कुछ गोल्स कॉमन थे एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज गोल्स. हमने कोरियोग्राफी वीडियोस बनाई, हमने कल्चर फैलाने के लिए जैम स्टार्ट किए, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड टेलिंग पीपल हाउ द वर्क इज डन. बिकॉज वी नो कि इंडस्ट्री में कितने करप्शन थी, कितना पैसा आगे पीछे हो रहा था, लोग क्या से डांसर्स किस तरह ट्रीट हो रहे थे, बिकॉज वी बीन थ्रू दैट एज वेल. I agree with that. Exploited, to be honest. So Anarchy 4 years strong. I mean the change is very visible. What we've done for the dance and the way you guys bring in hip hop scene as well. Like एक वैसे एक सवाल है strategically. When you guys created Anarchy, right? So you were the only b-boy and the other were like popping. And, so how did, obviously we know the results that we have now, but in the start कि क्या एक तो same goal था, but you know how did you guys connected, like you know b-boys, like what is the combination? So Anarchy जब start हुआ था तो there were 6 members. Yes. So it was me, Azhar, Naki, Rocky, Anas and Burhan as well. Burhan was a b-boy at that time. And after a while Burhan left the crew and you know it was just me. So the psyche was that okay, me and Burhan used to focus on choreographies में b-boying वाला part, and we were open to learn the choreographies that they guys were teaching as well. Okay. ठीक है, तो we always had a different representation, but मुझे पता था कि
4 बंदे बी बॉइंग, मैं 4 बंदों को बी बॉइंग नहीं सिखा सकता, लेकिन 4 बंदे मुझे popping and तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम अजहर, नकी, रॉकी, अनस इन टर्म्स ऑफ डांस. सही है. द हिप हॉप डांस जो मेरी बेसिक्स है वो उन लोगों ने मुझे सिखाया है कि ओके, मैंने उससे खुद सीखा है कि मुझे ये बताओ, लाइक मुझे रिदम्स का, बीट पैटर्न्स का, मुझे म्यूजिकलिटी का, मुझे पता था कि म्यूजिकलिटी क्या होती है, पर म्यूजिकलिटी मुझे पता नहीं थी. तो नकी ने मुझे वो बताया कि भाई म्यूज़िक किस तरह चलता है, म्यूज़िक स्टडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें. रॉकी का डांस स्टाइल अलग, अनस की अप्रोच अलग. सो ये सीन था. सो दैट्स हाउ स्ट्रेटेजिकली वी प्लेड इनटू दैट डांस वाला फैक्टर कि हाउ दैट स्टाइल्स मैच्ड. बट नाउ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आई एम अ फुल फ्लेज्ड हिप हॉप डांसर एज वेल, राइट. सो अब सबका स्टाइल एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया. बट एनार्की में जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि what the roles would be separated was that we know that in Anarchy everyone had a skill. Yes. Set of skills. Azhar has dope videography, editing, and all Best, these skills. no doubt. Anas has animations, graphic, and Crazy. all these design skills. Naki and Rocky and Amazing Anas, choreographers. they have fucking amazing choreography. So when Anarchy was formed, मैंने उनको ये बोला था because I was always like the outgoing person. By that time मुझे पता था कि what's networking, how do you talk, how do you get people to listen to you. तो मैंने बोला था कि I'll be the one who will manage things. You guys do all the work. So till this day, like of course with time I had to learn skills as well. Yeah. कि everyone is busy, everyone has a life of their own. So over time you learn more skills. बिल्कुल. I can do choreography now, I can do editing, and I can do these. Mashallah. But the roles have always been divided. So the JDs to find. हाँ, तो ये वाला सीन है. So I always do, मतलब जो भी आइडियाज़ होते हैं कि अच्छा पेपर वर्क, ये वो सारी बात, ब्रांड्स, डीलिंग, ये सब मैं संभाल लेता हूँ. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बॉयज भी सीख गए, so they can negotiate, they can talk. And obviously you guys are the brainchild for jam hip hop. So yeah, like first back then even breaking events हुए, no doubt. Breaking events, amazing workshops हुई, but they were not hip hop jams. Yeah. So like what's the story behind it? How did you get the idea, and why even you thought of it के मैं जो हूँ सिर्फ ब्रेकिंग को, बी बॉइंग को सिर्फ टारगेट या मैं उसको ये कैटर करूँगा, बल्कि आई एम गोना गो विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप. सो द स्टोरी बिहाइंड इट एंड that fire, how did it started, and the story goes on. Yeah, so when I talk about 2012 and 2013, so at that time b-boying events were happening a lot. Yeah, a lot. जिस तरीके से आजकल rap events हो रहे हैं. Yeah. Shout out to everyone who's doing rap events. Shout out. उस टाइम पे I didn't see any rap, any beatboxing or any graffiti events happening, right? B-boying was there because Act 1 was there. So every Saturday, Sunday, the dancers and the B-boys knew कि भाई हमें यहाँ पे जाना है and हमें we have to train, right? Yeah. So up until 2016, it was only B-boying, right? और कराची में, पाकिस्तान में B-boying के अलावा लोगों ने और कोई डांस स्टाइल देखा ही नहीं. Poppers and lockers जैसे Naki and Rocky, these guys are the pioneers of bringing the popping, locking and urban dance. Absolutely. Urban though is the wrong word, but open style dancing. Open style dancing, yeah. Anas and all these included. Like these guys have that, that mindset title and titles. that they should get that respect. Yeah. क्योंकि लोगों को आज तक नहीं पता Naki, Rocky, Azhar, Anas लोग है कौन. Just now they're getting to know because these guys, मतलब dubstep dancing जो पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे थे दूसरे dancers को, Naki and all they were doing here. Bro, I think इनका like उनका अलग लेवल था bro. बहुत crazy, no doubt. So 2016 के बाद एक टाइम आया जब jams खत्म हो गए थे. There were no jams happening at all. So सबसे पहला jam जो हुआ था वो भी एक rap event था which is called Rhymistan, लाहौर में हुआ था. Rhymistan, shout out to Hassan Amin, shout out to the Anarchy group. हसन अमीन ने बोला, तो मैंने हसन अमीन को मैंने टेक्स्ट किया कि ब्रो ये सीन हो रहा है. तो उसने बोला कि ब्रो इफ़ यू आर अ डांसर कम थ्रू. ही managed our stay and everything. और वहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ, 10-15 लोग आए हुए थे. So लाइनअप में जूनियर जैब्स और फ्रेश सोल्स था, सनी खान दरानी था, हसन अमीन था, ये था, तो 10-15 लोग थे. बट द इवेंट वाज मोटिवेशन के यार something is happening. Like they like people like you, right? Exactly. Like a community, society start. वही और फिर वो वापसी आके हम लोग वहाँ से लाहौर से वापसी आए and we did Rhymistan 2 in the grid कराची में. मैंने और माज द मशीन गन हमने मिलके कराया था. So उसमें JLV भी आया था. उसमें वही हमने डांस एलिमेंट इंक्लूड किया, डांस साइफर्स हो रहे हैं वो. आर कल्चर और हिप हॉप जैम का जब स्टार्ट हुआ था तो the goal was never to bring just breaking or just dance. The goal was always to bring dancing and all the hip hop elements together. क्योंकि
पूरी ज़िंदगी बाहर के दुनिया के इवेंट्स देखें, आई ऑलवेज सॉ कि अच्छा हर इवेंट में ग्राफिटी हो रही है, हर इवेंट में लाइव रैप परफॉर्मेंस हो रही है, हर इवेंट में डांस बैटल हो रहा है, आफ्टर पार्टी सीन हो रहा है, so कुछ फॉर्मूला है। जब मैं दुबई गया पहली बार, माई फर्स्ट एक्सपोजर टू इंटरनेशनल इवेंट सोल DXB, और वहाँ पे मैंने लोकल जैम अटेंड किया, तो मैंने ये चीज़ वहाँ पे देख ली कि द कल्चर इज़ डिफरेंट आउटसाइड एंड वी डू हैव नो फकिंग क्लू व्हाट द कल्चर इज़ अब्रॉड। मतलब वहाँ के जैम्स आर डिफरेंट ब्रो, द एनर्जी इज़ डिफरेंट, द हसल इज़ डिफरेंट, पीपल आर जस्ट लाइक यू नो दे अलग लेवल। मतलब मैं अंदर रूम के अंदर एंटर हुआ हूँ और साइफर्स हर जगह चल रहे हैं वहाँ पे लोग। wait, we got to know, obviously we क्या got to know यार, तो दोस्त है मेरा क्या एक तो hosting है, we got to know मतलब like fuck I saw a story bro obviously so like we would love to know कि यार तुम जब दुबई गए तो you know what was your experience, and I think मैं तुमसे उससे पहले मिला हूँ, and after that वो जर्नी के बाद, उस एक्सपोजर के बाद तू बहुत बदल के आया है, तो क्या सीन है ब्रो यार। सो मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि इफ़ आई वांट एक्सपीरियंस हिप हॉप तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। कराची में मुझे यू नो खस्ता और खालिस मुझे हिप हॉप नहीं मिलेगा। नो ऑफेंस टू एनीवन, कल्चर इज डिफरेंट, एवरीवन नोज यार क्या चल रहा है। द ट्रेजेडी वाज कि पहली बार जब मैंने कैश टैग किया था ना कि ब्रो आई वाज वर्किंग अ जॉब दैट वाज पेइंग मी 50,000, उसमें मैंने घर को सपोर्ट करना है, 50,000 में ब्रो कुछ नहीं होता। सही है। तो मुझे याद है देयर वाज अ टाइम कि मैंने अपने एक्स्ट्रा खर्चे ना, मतलब बाहर का खाना, बाहर के चिप्स, पानी की बोतल सब लेना छोड़ दिया था। आई वाज स्टैकिंग यू नो पेटी कैश, कोई गिग आया उसमें डाल दिया, एंड आई स्टैक्ड अप द मनी। ये 2017 की बात है। Okay. 1-2 महीने बाद मुझे दुबई निकलना था, आई वाज गेट द टिकट एंड वीज़ा सॉर्टेड, आई गॉट मग्ड। तो हुआ ये वो सीन हो गया, देन आई हैड टू रीस्टार्ट एंड बी लाइक अच्छा ठीक है फिर से। 2018 में आई स्टैक्ड अप मनी, यू नो आई आस्क्ड पीपल फॉर हेल्प एज वेल। तो एक मेरा दोस्त है, ही यूज्ड टू वर्क एट द न्यूक्लियस, ठीक है, I'm forgetting his name, I'm sorry, I forgot his name, it's okay, हाँ। मैंने ऐसी स्टेटस डाला कि you know can anyone support me for you know my travel to Dubai, and people have always been kind, that dude was like I'll pay for your visa, so he paid for my visa and everything, and absolute love यार, exactly, मतलब उसने बोला था when you get famous you know you can pay me back, and ये वाला सीन था। And over the years I've had a huge amount of help from people. तो मैं पहली बार जब दुबई गया तो I was just there for a week, and I was just there for a battle. International b-boying competition था, Slam Fam दुबई में annually होता है। वहाँ पे गया था and just to you know compete, and उस टाइम पे मेरा एक battle mentality था कि I want to be a you know best dancer, win everything. तो I got down in the battles, b-boying battles में top 8 तक आया, you know top 8 में, like it was fun, I ciphered with everyone, I met a lot of people, but luckily मेरी दुबई की जो return flight थी वो हो गई delay, and उसी delay में there was this event happening, Soul DXB, that was a talk of the town, and Soul DXB is a hip hop festival, it's a you know 3 दिन hip hop festival, fashion, dancing, सब कुछ वो है, and उसका मैंने 2 दिन attend किए थे, like I attended one after party and the first day, and my mind was like kaboom ब्रो। वो ऐसा इवेंट है कि नास बैठे हुआ यू नो वहाँ पे कैफे में ड्रिंक कर रहा है, डिवाइन पूरा फेस्टिवल घूम रहा है, जोई बैडास पार्टी कर रहा है, मसेगो आया हुआ है, ऐसा क्रेजी सीन। ब्रो मेरी मैं पागल हो गया था, और वो एक दिन मुझे याद है कि फर्स्ट डे वॉज द प्री डे, मैं दोस्त के साथ मुफ्त में गया था, सेकेंड डे मैंने टिकट लिया और मैं गया हूँ, और इवेंट है 12 से लेके रात 12 बजे तक, मतलब आफ्टर पार्टी वगैरह रात के 4 बज जाते हैं। मैं इवेंट पे खड़ा हूँ, मेरी 11 बजे दुबई की फ्लाइट है, और मैं 9 बजे इवेंट में अपना सूटकेस लेके खड़ा हुआ, क्योंकि आई जस्ट वांट एक्सपीरियंस। गिग्स परफॉर्म कर रहा है, मैंने मसेगो को परफॉर्म करके देख लिया है, एसएप रॉकी मेरे सामने से चलते हुए जा रहा है, ब्रो मेरी फट के हाथ में आई हुई थी कि हो क्या रहा है। मैंने अम्मा को बोला, मैं दिल चाह रहा था मैं फ़ोन करके अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मा छोड़ दो मैं नहीं आ रहा। ये वाला सीन था। मैं 2018 में जब वापसी आया हूँ, और I couldn't sink it in. I was like, ये हुआ क्या मेरे साथ? I told everyone, I was like, bro, ये सीन है। At some point एक बार आके हर कोई तंग आ गया था मेरे से, cause I was telling them, मैंने कहा bro बाहर का सीन क्या अलग है, ये वो Soul DXB मैंने वो को पागल कर दिया था। 2019 में फिर से गया, और मैं 2019 में गया था सिर्फ यही फेस्टिवल अटेंड करने। अच्छा। और इसी फेस्टिवल के like went there for a week, and it wasn't about having fun, it was about learning के bro तुम्हारी सोच है, समझ रहे हो। उसी इवेंट पे मतलब मैं 4 दिन जब इवेंट पे था, मैं डिवाइन से मिला, मैंने राजो कुमारी के साथ मतलब गली गैंग के साथ पार्टी की है, मैंने वू टैंग क्लैन को लाइव देखा है, मैंने YBN कोडे को लाइव देखा है, मैंने क्या क्या नहीं किया उस पार्टी में ब्रो, इट वाज अमेजिंग।
Amazing. और वो जब मैं वापसी लेकर आया था ना, आई वाज लाइक यस, नाउ वी डू आर कल्चर प्रॉपरली. बिकॉज आर कल्चर 1, 2, 3 तुमने जो देखे थे, दैट वाज मी, not 3, आर कल्चर वॉल्यूम 1 and 2 जब तुमने देखे थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई केम बैक फ्रॉम सोल DXB. जस्ट आइडिया, इफ आई एम नॉट गेटिंग द टाइम लाइन्स रॉन्ग. हाँ, सोल DXB 2019 के बाद जब हमने आर कल्चर वॉल्यूम 4 और 5 फेंका, तो यू सॉ द विजन वाज डिफरेंट. ग्राफिटी हो रही है, साइफर चल रहे हैं, मार्केट प्लेस इवेंट हुआ है, बैटल, सब कुछ, इंटरनेशनल डांस जजेस. तो दैट वाज द गोल. तो द चेंज वाज विद माय एक्सपोजर कि जब मैं गया और मैंने जब देखा, मैंने बोला कि ब्रो कल्चर अलग है, सीन अलग है, हमें वी डोंट हैव एन आइडिया. सो दैट वाज द विजन दैट आई वांटेड टू ब्रिंग. कि कराची जब वापसी आया, लाइक पाकिस्तान में ये दिखाना है लोगों को. आर कल्चर भी जो नेम आया था, बिकॉज वो कराची में रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए शुरू से ही मतलब फेसबुक में कमेंट्स आ रहे होते हैं कि दिस इज नॉट आवर कल्चर, दिस इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और ये और वो. ब्रो मतलब इंटरव्यूज़ पे ऐसी डांस, मतलब हमने चैनल्स के साथ इंटरव्यूज़ किए हुए हैं और उसमें लोगों ने आके मेरी माँ बहन नंगी की हुई है कमेंट्स में आके कि ये वो. ब्रो आई मीन इट्स नॉर्मल, चिकन की बात नहीं है. पता है तुम्हें, मेरा आई हैव बीन डांसिंग इन कराची इन पाकिस्तान फॉर 10 years और 10 साल में ब्रो सब कुछ सीख लिया है. मतलब गेटिंग किक्ड आउट. वो हमने मुल्लों से लड़ाइयाँ करी हैं, पर मुल्लों आके हमें भरम दे रहे हैं कि पीपल विद बिग बियर्ड्स एंड एवरीथिंग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, वो हमें आके भरम दे रहे हैं कि बंदे बुला के तुम्हें अभी मारूंगा. मैं बोल रहा अंकल क्या हो गया आपको, इजी हो, हम जा रहे हैं, समझ रहे हो. तो ये सब कुछ हो गया. सो एट दिस पॉइंट वो आर कल्चर भी नेम इसलिए आता है कि लाइक दिस इज आर कल्चर मैन, हिप हॉप कल्चर. देयर सो मेनी पीपल इन पाकिस्तान, आई एम श्योर यू कैन रिलेट. ठीक है, हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर है, वो है, बट I think hip hop culture is what we resonate to the most. Even if it's not our culture, we still want to be part of that. I heard one of your podcasts before as well. So as you talked about the 1980s say dance यहाँ पे कराची में specific area. Can you share the story as well, please, with us? Man, so I wasn't around that time, of course. लेकिन जो scene था कि you all know कि कराची before, how was it? It was a booming place. If I'm not, Karachi was the name, I guess, before Karachi, right? Karachi. So, funny thing, Mahmoodabad that we know right now, that used to be Funky Town. And Naki can tell that to you, because Mahmoodabad was the place, it was happening place. Wow. And my biological dad, वो भी एक dancer थे. ठीक है, सो दे ऑल यूज्ड टू गो बोर्ड बेसन के एरिया के तरफ कार्डबोर्ड्स लेके, जस्ट लाइक न्यूयॉर्क स्टाइल, अपने कैसेट टेप्स लगा के लोग वहाँ पे डांस करते थे. तो कराची में ये सीन था. Amazing. समझ रहे हो. तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स देयर सो मेनी थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान दैट force things to change. But it was always there. पाकिस्तान में तो खैर नाचना तो हमारे खून में है ना, लाइक सुनने से ही तब भंगड़ा ड्रम लाइक करना, मतलब no one can sit like वो हमारे अंदर है, बिल्कुल है. तो the dancing in Karachi as far as I know, और मुझे भी पता चला तो मैं पागल हो गया था, ओह शिट ये सीन है. तो उस टाइम से है. Amazing यार, ज़बरदस्त. And it kept passing on. I hope this time like जैसे बात हुई कि force हुआ, close down हुआ, and from this now I think क्या कहते हो कि I think it's gonna continue, it's gonna go boom or like go up more. Hip hop era, the revolution, the way you guys bring and the rap scene evolve in Karachi in Pakistan, and the wave is organic, and it was the time जब पूछते नहीं थे. You mentioned कि hip hop को कोई rap को नहीं पूछ रहा इस तरीके से. तो the culture evolved with time, and how is the experience up till now, Anarchy? And what you have, आप as a manager आपने बहुत सारी चीज़ें expose की, Red Bull and many other stuff. So how was the experience up till now? अच्छा, तो bro, if I talk about like individual cultures ना, तो Pakistan is still a very immature hip hop. In very अभी भी baby steps पे, just like 5-6 artists making it doesn't make it a huge industry. Right? And the artists who made it, good for them. I'm happy they're doing and making this a pathway for others to follow. But वैसे अगर तुम देखो कि graffiti scene का क्या scene है, there's no new graffiti artists over here. मतलब I know कि there's like people like Afan Tariq, people like Mr. Curly and Rebel is OG. Neil is not in Pakistan anymore, so he's moved abroad or somewhere. अच्छा. Spray therapy like mural artist and है, but as graffiti artists I know Afan Tariq and few more boys here and there, ज़्यादा नहीं है. So
not growing. Not growing. Beatbox community, तुम्हें पता है? You know, I can't remember the last time मुझे पता है बीटबॉक्स कम्युनिटी चीज़ें कर रही है. इट्स ऑल पर्सनल कि अपने वो डिस्कॉर्ड वगैरह पे जो तुम लोगों का चैनल है वहाँ पे तुम लोग कर रहे होते हो, बट इट्स नॉट सम एनीथिंग आउट इन देयर इन द पब्लिक. तो वो सीन भी आई डोंट थिंक इज ग्रोइंग. सही है, स्लो एंड स्टडी बेबी पे ऐसा ही है. ठीक है. अगर मैं बात करूँ रैपिंग की, तो रैप अब कराची में ये सीन हो गया कि ये उठाओ तो तुम्हें रैपर मिलेगा. You know what I mean? And it's good that we have a lot of rappers. But मेरा scene यही है, the only complaint that I have that people should always have the knowledge and you know the backstory of hip hop. And this is not just for rappers. This is for everyone. कि dancer हो, graffiti artist हो. Bro, हमारे पास DJs नहीं है. DJs नहीं है. हमारे पास proper scratching DJs नहीं है. वो आज तक आके वो एक पैनल लेकर आते हैं और वर्चुअल डीजे पे कोई इनकी ट्रांजिशन नहीं है. अगला गाना अचानक से कोई घटिया सा नॉन करके और वो अगला गाना. I swear, like no offense to anyone. It's true. It's happening. सही है. तो जो भी है लोग, they never done the, you know, most of them haven't explored the culture के how it started. So हमें पता है पाकिस्तान में रहते हुए हमें बचपन से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि क्या हुआ था इन यू नो इन आवर कल्चर के भाई ये चीज़ें कहाँ से आई थी. बट इफ़ यू गेटिंग इनटू समथिंग यू ऑलवेज रिसर्च अबाउट इट एंड गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है, आई एम श्योर अगर तुमने बीट बॉक्सिंग तुमने सीखी होगी तो यू शुड यू वेंट बैक. अच्छा स्टार्ट कहाँ से हुई? एग्जैक्टली बीट बॉक्सिंग क्या पॉडकास्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? यू नो एनीथिंग व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन. सो फॉर मी हिप हॉप जब मैं डांसिंग के अंदर आया तो आई वेंट बैक एंड सी कि अच्छा ये हुआ कैसे. That's something that not a lot of people do here, especially the new up-and-coming artists. They're all attracted to, you know, okay, mic in my hand or the famous dance moves or some pictures with mic and थोड़ा सा flex वाला scene. Flex culture है ना, bro. You gotta play the part to get the part. मतलब even if they're not talented, you gotta say it. It is what it is. It is what it is. I'm not complaining, but एक चीज़ है. नहीं वैसे पाकिस्तान में if we talk वैसे generally कि जो दिखता है वो बिकता है. It's very obvious और ये चलता आ रहा है तो I think it's fine. So normal. Coming back to your question के what's the hip hop culture growth? So in my personal opinion, and nobody has to agree with it, this is my personal opinion that अभी हम बहुत पीछे हैं. We're years back from the whole world through various reasons. हमारे पास resources नहीं है and you know आपस में हमारे पास community factor नहीं है. मतलब bro यहाँ पे लोग दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते. You know if I'm here right now and if anyone comes to me, you know, कि भाई ये achievement है, good for you man. And किसी और का success is not your failure. Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है. You should appreciate, you should be happy for him. तो hip hop scene is way far behind, and you know it's gonna take us a while to be where it, you know, it's in the process. Yeah, I'm not being like a anti. हाँ, लेकिन obviously other constraints होते हैं यार, चलेंगे तो. मतलब मैं वो नहीं demotivate नहीं कर रहा कि वो बहुत bad है, but it's in the pipeline, but it will take some time. Take some time. As far as Anarchy's experience, you mentioned कि हमने Red Bull के साथ काम किया, Jazz के साथ काम किया, so alhamdulillah Anarchy has worked with a lot of brands with the वही mindset के जब लोगों ने काम देखना start किया तो they were like okay they're doing something different. After a while it was that we were bagging all the gigs and all the brands, working with the big brands. और इस टाइम पे हमें पता था कि we wanted to not only fight for ourselves but we wanted to fight for people dance community. अच्छा वैसे like obviously you guys working at you know at the creative side as well for your passion. सही है. तो एक वैसे ही for every artist out there who you know wants to obviously अब यहाँ पे इतना creatively जो creative artists वगैरह हैं who wants to pursue their art as well. तो एक सवाल है कि you know एक financial stability और एक you know following your dreams उनको दोनों को साथ लेके चलना एक what are the challenges and you know obviously you are doing it, I'm somewhat doing it, everyone who is out there who's working on the content as well and also on the bread as well. So you know what it's like थोड़ा एक you know you're also living a normal life as well at the back of the day. तो थोड़ा उसका share करो उसमें you know like experiences, थोड़ी hardships, what could be the motivation to thrive every day, you know how to push it around. कभी you know creative blockchain भी लगता है तो you know like how to come back from that and you know continue that part ये कि नहीं यार and still need to do it. So थोड़ा सा इस पे But it will be a long answer. Let's go for it. If you talk about the hustles and hardships or having like you know a very good friend of mine told me that there's always one for the kitchen and one for the soul, you know.
one for the soul. So that means that living in the circumstances that we live in, especially in the place we are in, Karachi, Pakistan, dance has always been a taboo. And I'll be honest, people can feel free to disagree with me. If you fall in the music business, musician or cover singer or pop or whatever, I think it's fairly, you have more means and ways and platforms to go to and, do your thing, right? Dancers के लिए ऐसा कोई platform नहीं है, they're not role models to follow and all that. So, सबसे पहला hustle यहाँ पे आता है, ठीक है? Then being at this point, like my elder brother is abroad, and right now I'm the man of the house. I mean, he supports from abroad, but यहाँ पे एक man of the house वाला factor है. So I have to work an odd job. मतलब 10-12 घंटे अपनी ज़िंदगी के Monday to Friday निकालने हैं मैंने to work that job, to do well in that job, to earn bread and support the family. Amazing. And then in between find time to do things for myself as well. So you're pretty fixed with your schedule, something like that? I'm not fixed with my schedule, but there's a lot of sacrifices that I have to make. वो इस तरीके से होता है जैसे कि मुझे पता है कि अभी right now my current जो schedule चल रहा है, it's kind of like I go to work at 8, I come back home in the 5 o'clock. I get off. I drop my sister home. I go to the gym. I work out for 2 hours in the gym. I come back home. I dance. I train my dance. I get some sleep depending कि अगर जैसे कि अभी पिछले हफ्ते का सीन था कि मैं सब पूरा मैं schedule करके आया and I have a meeting at 3 in the afternoon और अभी डांस करके मेरे को 9-10 सुबह के बज गए. Sleep for 5-6 hours, get up, go to the meeting, get the work done. Just going डायरेक्ट ऑफिस कंटिन्यू. समझ रहे हो? तो इन बिटवीन मैंने अपने सारे स्कूल के दोस्तों से मैंने भी दोस्ती ख़त्म कर दी है. सही है. Like people I grew up with around. So that was the sacrifices that अगर मैं किसी को बोलूँ कि this is have to give, this is something you give, because of course they were good friends, but हर weekend किसी की बर्थडे आ रही है, कहीं जा रहे हैं, खाना खाने, ये chill. I couldn't make the time for it because I wanted to give time for my art. समझ रहे हो? बिल्कुल सही है. Makes sense. You had to. That happens, and when you talk about the creativity block, though, bro, it's very easy to burn out when you have this kind of schedule. मतलब अगर living in these circumstances right now, or if it comes to a point where any dancer बोलता है यार मैं डांस छोड़ रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ, bro. I won't force you कि नहीं छोड़ो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ. If I was if anyone was in my position, वो अब तक छोड़ चुका होता. Because there's so many reasons to stop. अभी तक एनार्की हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वी ऑलवेज लाफिंग अबाउट कि अबे यार यही कर लेते हैं. वी सी अ वीडियो के फनी मीम्स वायरल हो रही होती हैं, लाइक अबे यार इसी में घुस जाते हैं, थोड़ा फेमस तो हो जाएंगे, अबे यार ये कर लेते हैं, अबे यार ये कर लेते हैं, अबे यार ऐसी कंटेंट बनाते हैं. बोलते कभी यार जब हम लोग लाइक एक जैसे बात होती है, लाइक ऑब्वियसली लाइक दैट्स व्हाट वी डू, लाइक समटाइम्स टॉक के यार बंदा क्रिएटिविटी करके रहा दैट people might like it, people might view it, and the audience create hoti hai, and that's what entertainment is all about. It's about what we're feeling it, grooving it, making the word joy that represents it all. If that makes you happy, that makes us happy, that makes Anarchy happy, and that's what they've been doing for a very long time. Mashallah yaar. Or later on, I think let's talk about future plans. कुछ पता नहीं. हाँ, obviously uncertain को हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन like एक छोटे मोटे you can say like hey, this is what I want to do something in the future. चलो कुछ करना चाहिए. खत्म होने वाला है क्या? सवाल खत्म हो गया हमारे पास? नहीं बहुत है. अच्छा. Man, future plans. तो that's always like a very often asked question. काफ़ी लोग पूछते हैं. अभी साइम भाई मुझसे पूछा है क्या? The most common question. Yeah. So bro, right now the plan is focusing on ourselves. अगर एनार्की के बारे में मैं तुम्हें पता है कि we've been doing a lot for the community for the longest time. I don't want to brag. I don't want to be the person कि हमने बहुत किया, but you're just telling it out there कि जब एनार्की start हुआ, we've been more focused on helping others, community, like bringing people together. Yeah, everyone is proud of that. To be honest, I think तुम्हारी first jam, when we talk about it, you were there. Like how many people were there, and then if we talk about the second, third, fourth, people start increasing. People came along. So amazing place to meet people and understand. It's a healthy environment. Kids are here.
बच्चे भी है लाइक अमेजिंग फैमिली आई हुई है मतलब एक मुझे याद है EXG ने बैटल करवाया हुआ था और बरकत अपनी मदर के साथ आया हुआ था एंड शी वाज सिटिंग इन द मैंने बोला यार क्रेजी दिल ले गए और फिर छोटा बच्चा लेकर आया हुआ है समझ रहे हो साइड पे बैठ के कुर्सी पे बैठ के बैटल देख रहे हैं ऐसा सीन हो रहा है राइट सो सारे खुश बिल्कुल अच्छी right now for Anarchy it's just focusing on ourselves ke you know we gotta get more content out we gotta get our merchandise we gotta focus on things मतलब बहुत सारी चीज़ें pipeline में but it's just you know prioritizing ourselves किसी relationship में और अभी भी you know like it's एक वैसे है कि like क्या कहना चाहिए एक वैसे बात बोलो तुम्हारी शर्ट ना मुझे कब से लग रहा है तुम पाकिस्तान की जर्सी पहने हो कसम से it gives off the पाकिस्तान ग्रेप green we are the green vibe अच्छा एक one question Taishi Yes. you एक बात आपने कही और वो बहुत relevant मुझे भी लगी और काफी viewers को भी लगी हाँ बिल्कुल it's important to mention you have to live hip hop yes you just make a statement oh shit हाँ yes you have to live hip hop the part you were telling hustle yeah hustle is very much connected with hip hop rappers भी बहुत कर रहे होते हैं सारे मतलब जो parts हैं and I would you have to live hip hop please elaborate this to us I would disagree to one thing कि a good friend of mine जो तुमने बोले कि ये hip hop like hustle is part of hip hop I would disagree to that क्योंकि मैं a good friend of mine Tamir he's from UAE and he said that hip hop doesn't have to be a culture of poverty you don't always have to be broke or have to hustle if you're if you're in the hip hop culture you can be smart about it you can make your own streams but hustle to make it there as an artist is always there that in a way ke there's no easy way or there's no fast lane fast lane तभी होती है कि तुम्हारा कोई तुक्का लग गया and you're there बिल्कुल but वो ज़्यादा last नहीं करता क्योंकि one time wonders one time hits they don't last forever exactly and बहुत fine difference है in between someone who's actual में hustler है और someone जो fake कर रहा है I'm sure you can see who's in it for the game and who's in it for the fame बिल्कुल ऐसा ठीक है वही वाली बात है तो any real artist and it's not just hip hop if you're a calligraphy artist if you're a voiceover artist beatboxer dancer painter any category कुछ भी तो आपको टाइम देना है उस चीज़ को ऐसा ही है you have to put in the hours you have to put in the process पूरा ना the artist goes मतलब don't fall in love with the results fall in love with the process the second step you're gonna take the second day you're gonna make जब तुम process पे like if मुझे पता है कि 10 years is a long time समझ रहे हो मैं अभी भी 10 साल से डांस कर रहा हूँ and I'm still not there yet where I want to be तो hustle never stops the hustle and the grind never stops you keep moving we keep it moving एक चीज़ नहीं चली एक चीज़ जो I would give a a personal suggestion that people you don't have to be stuck at one place explore अगर I'm sure so many artists have multiple doors closed on them कि आप एक brand से बात कर रहे हो brand deal work नहीं करती and some people might be disappointed and कि यार opportunity नहीं मिली but if you look around one door closes another one opens so just keep moving the best step is to do what you would love to do do what you like to do and do what you need to do मतलब वो करो करने वाले को मिलेगा there's no way I'm quoting Sambhai right now he's just sitting right there he's like करने वाले को मिलेगा there's no way that you put in the honest hard work and you don't get the fruits of your own labor तो वही वाला scene है you have to earn it you have to earn it you'll never get it like this ये अगर ऐसा होता तो bro क्या ही बात थी मैं घर पे बैठे बस आई एम द बेस्ट डांसर नहीं मैं सब कुछ यार बिल्कुल ऐसा ही you gotta fight for it you gotta it's amazing man. The part of the hustle the process the go through नहीं I'm just a regular guy यार अच्छा मैंने ये वैसे ये चीज़ सोची थी लाइक मैं तो रिटायर्ड हूँ तो लाइक एक बात कह रहा हूँ लाइक ज़रूरी नहीं है कि if I was a beatboxer that should I should continue being creative in just beatboxing I can pursue other directions as well that that I can be passionate about again क्योंकि अक्सर होता है कि like you just don't feel like doing it anymore and you like move to the another direction कि what let's try this let's try this maybe I can find a bit a new spark a new journey a new exposure let's see what goes around like तो एक बड़ी मजे की चीज़ होती है like for example you first were a breaking and you moved into a very different direction and तुमने जो
transformation. Yeah. So it's pretty amazing, yeah. Beautiful Thank you, journey. man. Man, the example is there. We have Imtiazing in the building. Exactly, Imtiazing in there in the Beatbox. building. Beatboxer and now rapper. Beatboxer and a rapper. Beatboxer, then into creating your own songs and music. Yeah. And that is just you exploring yourself. सही है. बिल्कुल ऐसा ही है. I mean, if you play cricket, then if you are a bowler, then you have to bat. You have to be good at fielding. You have to be, be the overall package. So I think even it's not just for me, not just dancing. I have multiple ways of expression. So I have dancing. That's first and foremost. I think you have another Instagram page for Ahle-E-Taishi Vision. Ahle-E Vision, yeah. I love candid photographies and candid videos. Like just doing that, thing. It's just my way of seeing things, So. Then I have another way of, expressing myself, that I make abstract art. Amazing. I'll take a blank piece of paper, I'll just play some music, and I just, just start scrambling random shit, what I feel according to the music. Amazing. So I have, everyone should have more than one ways of expressing yourself, because मुझे पता है कि there was a time when I was happy, I was dancing, I was sad, I was dancing, but एक टाइम पे होता है कि ब्रो बहुत ज़्यादा हो गया है कि even though I move differently, but you just have to sometimes, walk away from it and then go back to it again to fall in love with the process all over again. क्योंकि अगर recently मेरे साथ ये हो रहा था कि I was too focused on the technique of dancing. कि मैंने ये angle मारना और ये करना है, but I wasn't actually dancing. Okay. So what I did was to fall back in love with the process. I stopped dancing for a week because I wasn't feeling it. And after a week, I went back to the things I like. मैं bro classic early 2000s के गाने चला रहा हूँ, super bass और ये club can handle me. मैं bro बस मैं नाच रहा हूँ because I wanted to feel that feeling of dancing again. Because that's why I fell in love with dancing. The butterfly process. वही, Oh, okay. Beautiful, yeah. वो वाला scene है. So I think you just have to keep it moving and express yourselves in any ways and accept yourself. Accept yourself in a way कि अगर तुम उदास हो आज, सही है, तो तुम be उदास, express yourself in a उदास way. That's just me personal. अगर I can't fake myself, ठीक है. अगर मुझे इस पॉइंट पे अगर गुस्सा आ रहा होगा तो यू कैन सी इट इन माई वॉइस कि मैं तुम्हें साफ साफ बोल दूंगा. यू नो मी कि मैं एक मुंह फट आदमी हूँ एट पॉइंट्स, तो इवन आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ विद आर्ट एज वेल. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं डांस भी गुस्से में करूँगा. अगर मुझे खुशी है तो मैं डांस भी खुशी में करूँगा. I can't force myself. Amazing. So that is one thing that people should be honest with themselves. Beautiful. नहीं यार बिल्कुल. That's what makes you an artist. अच्छा guys, so welcome back. हम सब ने पानी वानी पी लिया सन. बीच में अब ऐड चलेगा इसमें. 09007860. देखें हम ऐसा जिंगल बनाया था ना टेलीफोन लेकर. अभी तक याद है. International है bro. भाई. चलो let's talk about sentiments. And well अभी depressing बोल रहा हूँ. नहीं. But your sentiments towards shoes. Shoes. Yes. ये मैंने निकाला था सवाल. मैंने अलग से निकाला. मैंने बोला man. ऐसी वजह से shoes की बात करेंगे. This is actually very good story. So everything in life, I had to hustle for it. Yes. सही है. Malab, of course, if I talk about, we don't come from a strong family background. My mother is a hustler, and that's where I got all my hustle from. Being a single mother, she did her best, and she gave us the best lifestyle. More than we could ask for, or more than we asked for. तो शूज़ के साथ सीन मेरा ऐसा था कि बीइंग इन अ क्रिकेट थिंग, तो ट्रेनर्स का सीन था और जूते होने चाहिए थे. बट I never had shoes from day one. अगर shoes होते भी थे तो स्कूल के होते थे. I can't ruin shoes, school shoes. फैमिली में बजट भी थी तो सब कुछ देख के चलना पड़ता था, of course. तो I remember कि मेरे पास 2-3 जूते थे भी. दैट मैं एक बार मैच खेलने गया था, एंड आई हैड दीज कलरफुल शूज़. मैं क्रिकेट मैच खेलने गया, तो एट द एंड ऑफ इट अगर मैं दिखाऊं तो ये जो मेरा पूरा जूते का सोल था ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये पूरा निकल के अंदर की पैडिंग निकल के, आई वॉज बेयर फीट. मेरे मतलब ऊपर से मेरे पास सिर्फ ये सोल था, मतलब ये जो ऊपर वाला सीधा, पर नीचे से आई वॉज फुल बेयर फीट क्योंकि उसकी सारी सोल निकल गई थी. एंड आई वॉकड, मतलब 10-15 मिनट की वॉक थी मेरे घर से, मैं पैदल वो उस पर गया था. सही है. फिर एक टाइम आया कि आई वाज लाइक आई नीड सम शूज़. तो माई मॉम टुक मी टू द फ्ली मार्केट फॉर द फर्स्ट टाइम. हम लोग पता नहीं कौन से कोई संडे बाज़ार वगैरह नहीं था, पर वही रैंडम ठेला था. एंड सबसे पहला पेयर जो था वो रीबॉक का जूता था, वाइट कलर का, जो 80 रुपये में लिया था उस टाइम पे, उस ज़माने में. उसके बाद मतलब मैं आज तक आई गो
get my shoes from flea markets and stuff like that. But dancing का शौक ऐसा था कि shoes का शौक ऐसा था कि you see dancers wearing the fly shoes all the time. सही है. Yeah. तो I fall in love के यार I need to have fly shoes, I need to have clean shoes, I need to have good shoes, Nikes, Adidas. तो मैं Sunday बाजार जाके बुध बाजार जाके जूते लेता था. And I remember like the first time I copped like a fresh piece for myself was in 2016. I was working, कुछ चीज़ें हो रही थी, अलहमदुलिल्लाह 2 पैसे बना लिए थे, that I could afford, a shoe for myself. तो मैं मतलब ऐसा था कि शॉपिंग मॉल में बहन के साथ था, saw the shoe that I liked. मतलब it was like a Air Force One copy, Nike Air Max 90 का copy था, but it was exactly like Air Max 90. And my love for Air Max 90s is मतलब next level. मतलब वो मैंने जूता लिया and it was on a discount. वो मैंने जूता खरीदा in 2016, right? Okay. Fast forward, now I've been blessed enough to okay, I got some hustle हो गई है. I can afford shoes right now. And then I got people like Swag Kicks, helping me out. मतलब अब जूता चाहिए होता है, so it's just like one call away कि यार ये हाँ. So my love for shoes, like I always want to dress fresh. मतलब मुझे I want to be presentable. Dancing में जूते ज़रूरी है. And like hip hop, अगर तुम culture की बात करो तो the fashion and your charisma is an important aspect of it as well. Yeah. So वो scene है. So my love for shoes is बहुत नेक्स्ट लेवल ब्रो. लाइक मेरे घर पे मतलब मेरे कमरे में मतलब जो दीवार में सिर्फ जूते ही जूते रखे हैं. वो क्लिप्स में आपको ये सारे गाइस जो जितने भी स्ट्रेट यूनिट होंगे ना, सबने वो क्लिप्स देखी होंगी. वो फ्रीस्टाइल, वो भाई लेट नाइट या फिर समथिंग, वो जोन, वो जूते स्पेशली जूते वो हमेशा होता है. तो वो माय लव फॉर फैशन एंड शूज has always been there. But shoes के साथ तो मेरी अलग सी attachment है. Like I always humble myself कि मैंने कोट पढ़ी थी कि कल को जितना भी मैं हवा में उड़ जाऊँ, ये जूते हैं मुझे रिमाइंड करने के लिए कि पैर हमेशा ज़मीन पे होने चाहिए. No matter how much you fly high, stay grounded. तो shoes in that way, for me, अगर fashion apart, when I look at shoes, at least my shoes, I know कि I need to stay grounded and humble the fuck down. Because तुम्हें अगर पता होगा, और तुम्हें पता है कि मैं पहले I was a generic asshole. मतलब मैं बहुत रूड बंदा था, तुम्हें पता ही है. सही है. I mean, agree to disagree, but I had a very loud mouth. मतलब मैं लोगों को बोल देता था, मैं बदतमीजी करता था लोगों से, and which is something that I learned over time as well. कि यार नहीं, इंसान के बच्चे बनो, क्या कर रहे हो. तो when I learned that lesson, तो humble and stay grounded वाला fact, तो shoes for me has that impact on as well. Beautiful, यार, beautiful. एक बहुत ज़बरदस्त story है यार. हाँ, तो yeah, my love for shoes is like that, man. Crazy. This is a real love. यार, और एक और ये है कि being creative plus अच्छा वैसे होता है कि mostly creative people are not good with the numbers. Numbers what like with the finance, how to market themselves as well, how to मैं चलो इतने चार्ज करूँगा वगैरह. तो ये लोग देख अभी जो अगले हसल कर रहे हैं, like the youngsters or young ones that are coming up to the ground, and how they should manage themselves rather than getting a manager. क्योंकि एक अलग cost है, या maybe you don't know what's going on in the back, and it's kind of a थोड़ा high thing, अब mediocrely थोड़ा आप सब famous होते हो. So obviously you cannot afford a manager, or maybe अगर दोस्त आ रहा है तो he is not even a manager, maybe he was just here for I'm gonna deal cut shit out. तो would love to know कि किस तरह मतलब like for the kids and everyone. Honestly, I have no idea. मतलब अभी भी I'm still winging it. Okay. In a way that if I talk about my international exposure, मैं दुबई जब गया था तो वहाँ पे मैंने सारे लोगों को देखा कि they're all dancers, right? और दुनिया भर में एक understood सा सीन है कि you have managers और तुम्हारे पास फिर artist है, सही है? The managers are always there. Internationally जब record deals, जब brand deals, जो सारी चीज़ें होती हैं rappers वगैरह के लिए, तो the labels and managers are always there. When they see the talent and they're like आ जाओ हमसे बात करो, ये करते हैं, ठीक है. For me, like if I talk about dancing, तो there's no one in Pakistan who's managing a dancer, a proper dancer or dance crew, ठीक है. तो for me, I had to learn as we go. मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था ब्रो. मतलब I didn't had the numbers, I didn't had the strategies. स्कूल में तुम्हें यहाँ पे फाइनेंस नहीं सिखाते. तुम्हें स्कूल में यहाँ पे नहीं दिखाते कि how to save money, financial, stability, आपके taxes वगैरह. मतलब जब आपको लत पड़ती है ना, फिर बोलते हैं कि oh shit अब क्या करना है, जो figure way out. मतलब कराची में हर बंदा street smart है, so हमारे पास सारे तरीके होते हैं कि हम smart work and hard work. Just have to figure it out. Still this day I'm figuring it out. मतलब मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें
मिलती हैं एंड ओके आई एम लाइक अच्छा ठीक है ये चीज़ इस तरीके से ये चीज़ इस तरीके से होगी. तो द ओनली एडवाइस आई वुड गिव टू द young ones and you know people are up and coming to make sure that if you're doing it and if you're doing it you know any artistic or passion thing कुछ भी हो सकती है, not just hip hop related, make sure you treat it as a business in a way that एनार्की जब बना था तो मैंने एनार्की के बॉयज़ को बोला था कि वी नॉट गोना ट्रीट इट एज अ डांस क्रू, वी गोना ट्रीट इट एज अ बिजनेस. ऐसा ही है. दैट्स व्हाई यू सी लाइक यू नो द लोगोज, व्हेन यू सी लाइक एवरीथिंग, आवर पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग. तुम एनार्की को सही से जानते हो, सही है, तुम्हें पता है बिहाइंड द स्क्रीन्स हम बच्चों हैं बहुत ज़्यादा. तफरी तो है ना यार, ये यार मतलब इफ यू हैंग आउट विद एनार्की तो तुम्हें पता चलेगा कि हम आई विल बी ऑनेस्ट के like I said, you got to play the part to get the part. So I always tell my boys कि हम किसी भी अगर इवेंट में जा रहे हैं ना, the moment we're in the car, जब जो करना है, the moment we hit the venue का entrance, professional, foreign professional, just for those few hours. हमारी इसमें बच्चों चल रही होती हैं, but behind the screen anarchy is bro very तुम्हें पता है वो बच्चों थे हम लोग, we crazy people, like you know we're fun generic crazy people. हमें मतलब we've been in the worst of situations and we're always having fun. ठीक है. But the business side of it के we all understand कि as soon as you have this merchandise on, you have a representation. ठीक है. तो treat your business as a brand. Make sure you're sorted with your paperwork, your अपने and you know NTNs वगैरह सब बनाओ. Because when you are professional like that, अगर तुम्हारे पास कोई ब्रांड आके तुमसे काम करता है ना और तुम ऐसे ही मुंह बोले पे काम करते हो, ब्रांड तुम्हें लात मार देगा, ब्रांड तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा. But as soon as you have your paperwork, contracts, proposals, resume सब sorted out ना, बंदे बोलता है he knows his shit, let's not fuck with him. तो ये है बिल्कुल ज़रूरी. That is something that I learned very late. मतलब इस साल मैंने ये सारी चीज़ें मुझे पता चली कि मुझे करनी है. ठीक है. But any other person I would say कि get this done because that makes you professional and learn about these things. कि अगर तुम्हें पता है कि अगर मैं तुमसे आगे बोलूँ कि XYZ कोई फेमस ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, तुम्हें पता है फेमस बड़े ब्रांड कौन से, वो आके तुमसे बोले कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता ब्रो, मैं मान ही नहीं सकता. तुम इतना बड़े ब्रांड हो, सही है, बीइंग अ क्लोथिंग ब्रांड, बीइंग अ यू नो कंज्यूमेबल ब्रांड, कुछ भी ब्रो, तुम्हारे पास पैसा है, यू आर अ फकिंग $1 billion बिजनेस. Exactly. हाउ कैन यू से कि तुम्हारे पास यू डोंट हैव लाइक 500K टू स्पेंड ऑन आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, राइट? Facts. So you should know. You should know कि when brand is approaching you, they always have the budget, they always have money, and true. Learn to negotiate, learn to communicate, and learn to stand up for yourself. Also, if you अगर तुम अपने लिए खड़े होते, if you stand up for yourself, it's not going to be an easy way. It's not. तुम्हें पता है, like even those who don't know, अभी तक there are brands that haven't paid me because of me standing up for myself. ऐसा ही है. Like I hope we find a way. I can hope, but वही artist needs managers. You can't be an artist and manager both, because trust me, I am there and I've you know faced the consequences. There are people in the dance industry who hate me just because you know I thought it's okay. I was trying to take away their gig. There was this brand that I was supposed to work with, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन we were working with another choreographer. ठीक है. एंड सारी बात हो गई एंड आई वाज जस्ट लाइक ओके वी विल वर्क विद यू, हम आपके साथ काम करेंगे, कोई मसला नहीं है, बस मुझे एक चीज़ है कि हमें क्रेडिट्स मिलेंगे, हमें ट्रांसपोर्ट मिलेगा, हमें खाना पीना मिलेगा, ये चीज़ें जो एक बेसिक आर्टिस्ट होता है यार, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़. उसने बोला कि आप एडी या डायरेक्टर जो भी प्रोड्यूसर आप उससे बात कर लें. उससे लिटरली मेरे 3 मिनट की बात हुई है. कहते हैं हाँ आपको कोई बात करनी थी. मैंने बोला कि सारा मुझे बता दें, हम हमें क्रेडिट्स देंगे, खाना पीना आना जाना. यार आपको ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आपको काम करना तो करो, नहीं करना तो नहीं बता दो. मैंने कहा ब्रो उस तरीके से तो काम नहीं करता मैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत काम किए, इस तरीके से नहीं करना, आप करवा लो. इस कन्वर्सेशन के यू नो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आर लाइक उसके तो बहुत नखरे हैं, इनसे बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी. बट एट द सेम टाइम व्हाट एनार्की गिव्स देम नोबडी एल्स कैन गिव देम. Exactly. You know what I mean? Yeah. आज ही like literally हम लोग एक इवेंट पे गए थे, परफॉर्मेंस पे गए थे, हमारे ऑर्गेनाइजर से फड्डा हुआ था. Oh shit. फड्डा किस बात पे हुआ था? Because you might be aware of that place. हम वहाँ पे इवेंट्स कराते थे और वॉल्यूम बंद हो रहा था, you know, तुम्हें पता है. Yes. उसी बंदे का मतलब हमारा इवेंट खत्म हुआ है एंड फॉर दोज हू डोंट नो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं एंड मिड परफॉर्मेंस में उन्होंने गाना बिल्कुल लो कर दिया. और मैंने बोला एंड वो उन्होंने हमारे साथ पहले किया है, they've done it before with us. You made a video. और मैंने बोला कि ब्रो ये क्या कर रहे हो? exactly. तुम्हारा दिमाग सही है, सही है. और उसी बंदे का आज मैसेज आ रहा है कि ब्रो वी हैव एन इवेंट, वुड यू बी अप फॉर परफॉर्मेंस?
I was like, look how the tables turn, man. बोलते what's the point if you mute us, bro? तो मैं तो उसको सबसे पहले सिचुएशन ये होगी कॉल पे, मैंने कहा ब्रो बस आवाज़ बंद नहीं करना बाकी सब ठीक है, आवाज़ बंद हुई तो मैं नहीं I got to relate. एक मेरे साथ भी इस तरह का एक सीन हुआ था, म्यूट नहीं किया था बल्कि माइक छीन लिया था, लाइक I was performing for real and यूनिवर्सिटी का इवेंट था. I don't know if I'm खैर तो यूनिवर्सिटी का इवेंट था, लाइक परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक एंड व्हाट हैपेंड, नो व्हिच यूनिवर्सिटी यू वेंट टू ब्रो. तो सीन हुआ कि the guy came in, the host came in and just takes the mic away from my mouth and बोलता है हमारे बीच एक बड़े इम्पोर्टेंट बड़े जबरदस्त गेस्ट आ रहे हैं. तूने बताया था मुझे यार, मतलब मैं क्या बोलूं यार. और कौन है भाई? अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एंड द गाय इज फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, एंड वो अब भाई माइक छीन लिया. फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? सॉरी यार, तुमने जो करना था वो कर दिया, मार दी है, अब जिंदा नहीं हो सकती. तो अब इसी चीज में मैनेजर बीच में आता है. अगर तुम्हारा मैनेजर वहाँ पे होता, वो आके उसको बोलता है कि भाई तूने किया क्या है, पैसे पूरे दो, मैं अपने आर्टिस्ट लेके जा रहा हूँ. बट जहाँ पे तुम मुझसे लड़ पड़े, आता तो बड़ा बदतमीज बंदा, आता से तो काम नहीं करना. तो मुझसे लोग आगे पूछते हैं कि ब्रो आई वांट टू गेट इनटू डांसिंग एंड एवरीथिंग. मैं उसको ये बोलता हूँ कि लाइक आई विल बी रियल, आई डोंट वांट एनीवन टू गो थ्रू व्हाट आई हैव बीन थ्रू और व्हाट माय पीपल हैव बीन थ्रू. सही है. तो मैं बोलता हूँ इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, ओनली गेट इनटू इट इफ यू कैन पुट इन द वर्क. बिल्कुल सही. क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, दे लाइक द लाइफस्टाइल. ब्रो क्या लाइफस्टाइल है? तुम्हें पता है, वेयर हम्बल एज फक पीपल. मतलब जो किया है अपने दो पैरों से किया है. सही है. तो पुटिंग इन द आवर्स. अगर मैं कोई फैंसी स्टोरीज डालता भी हूँ, सही है, तो it's because I've fucking worked hard for myself, man. मतलब I at least owe it to myself. If I'm living a good lifestyle, तो bro, I've been through enough shit in life, so I've seen the highest of the highest, lowest of the lows. So I gotta give myself some break. So the lifestyle is something that you decide for yourself. But अगर तुम्हें इसमें actually hustle के लिए आना, तो it's not an easy journey. So make sure you're up for that. बिल्कुल नहीं यार, सही ऐसी बात है. Taishi, it's a passion, and one is having a full-fledged profession. Another profession, another passion. The hustle is that to make passion into your profession, so you will love your job. अच्छा, तो bro, कल मैंने इरफान जुनेजो की नई वीडियो देखी. अच्छा. And I love that guy's work. And the video was all about saying goodbye to my dream passion and dream career. So he was telling that he always wanted to be, a creative designer or something like that. जो people, पूरा brands वगैरह के लिए पूरे ads वगैरह pitch करते हैं, वो करते हैं. तो somewhere along the line उसको over the years उसने सुना कि इसकी creativity मार दी जाती है. You have to work according to the client, कि client ये चाह रहा है, कि बहुत सारे creative barriers होते हैं. So long story short, he said कि when you turn your passion into profession ना, then you have to work for your job. ऐसे ही समझ रहे हो. अब एट टाइम्स एंड आई कुड रिलेट कि अगर कभी कभार जैसे डांस का गिग आता है एंड यू हैव टू डू अ कोरियोग्राफी एंड तुम अभी बीच में आए हुए थे, मैंने वाज कोरियोग्राफिंग फॉर दैट, you saw how stressed I was because I was hating dancing. मतलब मैं एक आर्टिस्ट के लिए कोरियोग्राफी बना रहा था फॉर द न्यू सॉन्ग, एंड आई हैड टू टोन डाउन माय डांस लेवल अ लॉट to meet at their level, right? Because they're not dancers. और टाइम बहुत कम है. एक दिन में आपने पूरी कोरियोग्राफी सिखानी है, तो आपको फुल बेबी स्टेप ना, कि आपने जो 10 साल में सीखा उसको आपने बोलना है कि साइड पे हो, अब आ जाओ बेसिक ना 1 2, मतलब ऐसे कर, ठीक है. तो एट सम पॉइंट यू स्टार्ट हेटिंग योर पैशन एज वेल, कि अबे यार लाइक क्या चल रहा है, ख्वारी हो रहे हैं और वो हो रही है. So I don't know, I'm confused कि if I want to, of course the goal is to turn my passion into profession, but in a different way. मतलब if I want to get money out of dancing, then I want to be smart about it. मतलब मैं ऐसी चीज़ ना करूँ जिससे I would hate it, I would rather work behind the scene as a choreographer. I would rather open up a dance studio and I make that into a profession or teach or something like that. But अगर मैं इस lifestyle को अगर मैं एक profession में change कर दूँ, so I don't know, man. Like I'm confused. Like I will only know क्योंकि I've worked with clients and brands before, and I know कि आप उनको कितने concepts भेजते हो dance steps के, and उनकी अलग requirements होती है, and then you come up with the weirdest dumbest shit and वो चल जाती है, and you're like fuck. Commercial aspect जो है, एक commercial, एक हमारे industry में एक बहुत famous है कि ये commercial artist है और ये underground artist है, जो मुझे समझ नहीं आता. तो I think it's a balance. अगर to answer my own question, मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि तुम लोग कमर्शियल काम क्यों नहीं करते और तुम लोग ये क्यों करते हो.
सही है. But recently people started seeing us like हबीबी डांस स्टेप जो था वो मैंने और नकी जी ने जो बनाया था वो वायरल हुआ है. हाँ मतलब आसिम अजहर ने जब कर लिया ठीक है एंड हमें नहीं पता था कि ये वायरल होगा. Of all the shit that we do ये चल जाएगा. मतलब can you imagine पीछे हट का जब हमने स्टेप बनाया था of all the shit we done बस एक ये चल जाएगा. मतलब ब्रो मैंने 10 साल सिर्फ ये करने के लिए किए थे. आप लोगों ने वीडियो बनाई थी वो. Thank you. Connecting cities. देख वैसे बात है कि 15 सेकंड काम आ गए. वही तो लेकिन बैलेंस जरूरी है. कमर्शियल काम करो बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री यू गोटा बी रेलेवेंट. अगर तुम्हें वो काम करना है तो यू हैव टू सैटिस्फाई कि बी लाइक तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें अपना आर्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. इफ यू डोंट हैव टू ब्यूटीफुल इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है. वो बंदा बोले भाई क्रिएटिव फ्रीडम दिया हुआ है जो करना करो ठीक है. एंड आई होप पीपल फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी मोर. बट अगर बैलेंस रखोगे चलो ठीक है यू डू द कमर्शियल वर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द मनी गेटिंग द बैग अच्छी बात है. एंड देन ऑलवेज कम बैक एंड गो फॉर व्हाट यू लव. एनार्की का अगर तुम इंस्टाग्राम पेज देखो दिस मिक्सचर के हमने एक कमर्शियल काम किया हुआ है कि अच्छा हमने एक वीडियो बनाई हुई जो ट्रेंडी चलेगी और देयर इज ऑलवेज लाइक अ रॉ हिप हॉप फ्रीस्टाइल साइफर के भाई जो हम करते हैं. तो दैट्स हम बैलेंस ढूंढ रहे हैं राइट. अच्छा वैसे अब हम लोग बात कर रहे थे कि मैं उस वक्त थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ जब मैंने पूछा था कि लाइक यू गाइज हैव 2 B-boys एंड ब्रेकिंग एंड पॉपिंग बट थोड़ी सी यार क्या कहते हैं जो अजहर करता है क्रम्प यार लेट्स टॉक तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना कि मोस्टली पीपल डोंट नो अबाउट इट एंड पीपल शुड नीड टू नो अबाउट दिस कि यार कि व्हाट्स क्रम्प इज एक्चुअली लाइक मेकिंग सम एग्रेसिव एक्सप्रेशन है. तो उसके बारे में बताओ. इफ आई टॉक अबाउट क्रम्प एंड बिफोर क्रम्प पीपल शुड नो कि बहुत सारे डिफरेंट डांस स्टाइल्स भी हैं. सो B-boying इज अ टोटली डिफरेंट डांस स्टाइल. हिप हॉप फ्री स्टाइल जो मतलब करते हैं हम लोग इट्स ऑल अबाउट ग्रूव रॉक एंड स्केट. देन यू हैव पॉपिंग. अच्छा पॉपिंग लॉकिंग कोई डांस फॉर्म नहीं है कि वो लोग हल्का सा ये वेव मारते हैं और ये करते हैं बोलते हैं पॉपर लॉकर है. पॉपर लॉकर कोई नहीं है. Popping is a different dance style. It's all about hits. सही है. Locking is locking ठीक है. Then you have house dance जो house music चलता है shuffle भी नहीं bro. House music and house dance is a totally different thing. Okay. पहले न्यूयॉर्क में जब हिप हॉप कल्चर स्टार्ट हुआ था तो हाउस म्यूजिक वाज ऑलवेज देयर. हाउस म्यूजिक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म्स बिकॉज वो पूरा हाउस म्यूजिक पे ग्रूव और फुटवर्क्स और बहुत क्रेजी सीन है ब्रो. लाइक इट्स डिफरेंट व्हाट हाउस डांसर्स आर राइट. एंड देन क्रम्प arguably क्रम्प इज नॉट पार्ट ऑफ हिप हॉप क्योंकि क्रम्प का जो क्रिएटर है टाइटाइज वो हिप हॉप कल्चर का नहीं था. अच्छा सही है. बट इन द हिप हॉप कल्चर डांस की कैटेगरी में जब फॉर्म करता है तो एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर अंडर वन अम्ब्रेला व्हिच इज डांस. ठीक है डांस. तो आई डोंट कॉल माई सेल्फ कि आई एम अ हिप हॉप फ्री स्टाइल डांसर और कोरियोग्राफर. आई वुड कॉल माई सेल्फ लाइक मूवमेंट आर्टिस्ट और अ डांसर इन जनरल बिकॉज I'm not stuck to one style. पहले मैं B-boy Taishi था. सही है. And the transition to B-boy Taishi and Taishi Anarchy on my Instagram handle was के the name B-boy Taishi was मुझे रोक रहा था. It was restricting me. सही बात है. And then I was like, I just want Taishi to be my name. No B-boy Taishi, no choreographer Taishi, no hip hopper Taishi, नहीं, just Taishi. सही है. तो अजहर जो करता है क्रम्प इज लाइक aggressive and it's a lot of character, it's a lot of emotions के खतरनाक डांस है. एंड इट्स सो डिफिकल्ट. जो बात है इतना मुश्किल है ब्रो कि तुम अगर तुम 10-20 सेकंड क्रम्प के तुम फुल पावर में कर लो ना तुम्हारी सांस फूल जाएगी ब्रो. यू कांट यू नीड टू कैच योर ब्रेथ. ओके. तो अजहर जो कर रहा है अजहर इज अजहर डजंट वॉच अ लॉट ऑफ डांस बैटल्स. अच्छा. वो वीडियोस नहीं देखता ज़्यादा क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो देखेगा तो वो वहाँ से इंस्पायर होगा एंड ही विल स्टार्ट कॉपी इट व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो वो एक्सपेरिमेंट करता है उसकी मूवमेंट बहुत अलग है. इट्स एक्सपेरिमेंटल विद क्रम्प एंड इट्स ब्यूटीफुल. मतलब वो अपना जब स्टाइल कंप्लीट कर लेगा जब उसका स्टाइल बिखर के बाहर मतलब आएगा ना वो लाइक it's one of the most beautiful things so Krump is not a lot of Krumpers in Pakistan either. I only know Azhar bhai. मैंने पहली बार Azhar से मतलब Ramiz Law does Krumping as well. Dwayne भी Krumping करता था but there no one who does Krump like proper Krumper है हमारे पास they all know Krump. मतलब थोड़ी बहुत Krumping हर किसी को आती है basics but there's no Krumping proper. Dwayne का नहीं पता था कि हाँ Dwayne bro like Dwayne is not just a b-boy. Dwayne is a dancer. तुम उसको like he back in the days वो थिएटर करता था. उसका बॉलीवुड डांस तुम देखो तुम पागल हो जाओगे. उसकी कोरियोग्राफी स्किल्स तुम पागल हो जाओगे. हिप हॉप डांस hosting तो मतलब he's always there but Dwayne was like EXD crew was doing theaters everywhere bro. Wow. Yeah. मुझे वो जैसे कि वो एक बहुत फेमस कोई ग्रीस जो था बॉम्बे ड्रीम्स और ये और वो
bro, they have videos from 2010 उससे ही पहले की dancing, bro. Theaters कर रहे हैं उस time पे. तो EXD has been around, and you know, Dwayne is a good dancer. अब तो मतलब he's more into hosting and everything. But in his prime days, Dwayne is dangerous. Crazy scene. Yeah, that's knowledge drop, man. Knowledge drop. EXD. Love the boys. भाई बहुत ज़बरदस्त. चलो यार, एक सवाल है तैशी आपसे. आपकी कोलैबोरेशन रही रेड बुल के साथ, और वो एक इवेंट थ्रो किया रेड बुल विद यू गाइस, वो सब चीज़ें. इवेंट आपने जज किया, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, एंड आपको कैसा लगा वो इनिशिएटिव, एंड कुछ आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें उस हवाले से. मैन, रेड बुल के लिए, so you know, Red Bull Pakistan has been around for a while, and you know, they're trying and putting in the work as well. Yeah. My opportunity with them was, you know, I've known them since 2018. वो लोग आए थे, you know, they were interested in what I was doing, and they wanted to get into the hip hop and, you know, breaking scene in Pakistan. अब ये है कि if I talk about me personally, you know, they should be, you know, doing more workshops, and you know, they should be providing more for the community and scene. That's just my personal opinion. You know, everyone can, you know, disagree if they want to. I think if it's possible, then it should be possible. Yeah, the more we educate, the more it is possible, man. दुनिया भर में जब Red Bull कर रहा है तो पाकिस्तान में भी कर सकता है, right? And my experience with Red Bull BC1 was, you know, it was the first time happening in Pakistan. Yeah. And before, like, one of my biggest dance dreams was to win the first ever Red Bull BC1 Pakistan cypher. ये था Taishi in 2018, in 2019. सही है. अगर 2018-2019 में Red Bull BC1 Pakistan आता, तो you would have seen me on the main stage rather than judging. But over the years, my love for breaking, you know, थोड़ा सा हट गया था b-boying से कि मतलब it wasn't attracting me that much. Hip hop freestyle was something that I was leaning towards too. कि यार ये अलग ही सीन है. बिल्कुल सही कह रहे हो. इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. तो वो सीन था. So Red Bull approached us. You know, we already knew it was happening, and when it happened, you know, shout out to Masoom and Dania for qualifying. Yeah, shout out guys. And you know, I really hope that this isn't the last time that it happens, but it should be, you know, happening more than just one event in a year. Exactly. Like Red Bull ने 10 साल में, like 2013 से लेके 2022 में सिर्फ 2 चीज़ें कराई हैं. Exactly. 2013 में एक वर्कशॉप कराई और 2022 में Red Bull BC1 करवा दिया. So in between कुछ नहीं हुआ. ये भी है. नहीं, उससे पहले Red Bull BC वर्कशॉप भी तीन कर लेता. I mean, और 3 कौन सी? एक वर्कशॉप भी तो हुई थी उससे पहले अपना फाइनल से. Bro, वो एक ही चीज़ हो गई ना. पर 3 हो गई. मतलब फिर भी अगर 9 साल में तुम 3 इवेंट्स कर रहे हो, come on man. ठीक है. But shout out to them, man. Good for them. I really hope it changes. Shout out to them. Definitely. इसके बाद Red Bull आ जाएगा. हाँ भाई, क्या बोल रहा क्या बोल रहा है? Sorry फवाद. ये चीज़ मैं तुम्हारे मुंह पे ही बोलता हूँ. पर यार. Nice. नहीं, amazing यार, amazing journey. असद बताओ भाई, और कोई सवाल तो नहीं है भाई के लिए? खत्म हो गया सवाल. हाँ यार, बहुत सारे सवाल कर लिए. बस ठीक है, बताओ कोई और सवाल है तो ठीक है, और वरना वी रैप दिस अप मैन. तैशी, एक वन मोर क्वेश्चन. एक चीज़ है, जैसे साउथ एशिया की हम बात करते हैं, हिप हॉप कल्चर बहुत इवॉल्व होता है. वी हैव सीन नेबरिंग कंट्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन बूम है. इंटरनेशनली यू गॉट द एक्सपोजर. बहुत सारी चीज़ें आपने इंस्पायर्ड हुए. दुबई आपने जैसे मेंशन किया, आपने वी कैन से विद नो कैप वी कैन से कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम है हिप हॉप का. बिग बिजनेस, अंडरग्राउंड में इतना बिजनेस है, एंड एवरीथिंग. यू मेट डिवाइन. सो व्हाट विल बी Taishi's 4-5 some steps that should be taken in Pakistan? Oh shit! Oh man. Okay, to get it boom, because you have mentioned the scene is crawling. So how can it be a rabbit? How can it be bigger? We are rabbit right now. So what steps should be taken as per you? What do you believe in that? I think the first step is just doing it. Like बहुत vague answer है, but if I say कि just you know get into it, right? कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग बहुत सारे सवाल आते हैं. आई एम श्योर EncycloMedia Hub चलाने से पहले बहुत सवाल होंगे कि कैसे, कहाँ पे, क्यों, कौन, ये वो, राइट? एंड इट्स जस्ट मैटर ऑफ करो, मतलब शुरू कर दो, एंड यू नो थिंग्स फॉल इन प्लेस इवेंचुअली, राइट? बट जस्ट मेक श्योर दैट एक विजन और एक गोल माइंड में है कि यार करना क्या है. सही है. That's like Anarchy में, like I said, half the things we were winging. हमें पता नहीं था कि हम ये कर लेंगे, अच्छा ये भी हो सकता है. But
do it. I think the best advice that I would give is like do it professionally and do it, respect yourself. Yeah. You know, do it professionally and respect yourself, because in Pakistan हमारा इंटरनेशनल कल्चर नहीं है ब्रो. इंटरनेशनली लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. तुम इंडिया में देखते हो कि इतने सारे लोग हैं क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, राइट. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ओवर देयर, सो इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीवन. वहाँ पे हर कोई बंदा पैसा बना रहा है, राइट. एंड इफ़ यू गो अब्रॉड, यूरोपियन कंट्रीज, डिफरेंट गेम. उनकी गवर्नमेंट इवेंट स्पॉन्सर करती है, सही है. कोरिया में, यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज़ में द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स यू मनी. ऐसा ही है. आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आप भी करवाओ. अच्छा, कोरिया में तो कहता है कि वो जो होता है, इफ यू टॉक अबाउट द ग्रुप्स, डांसिंग ग्रुप्स, दे हायर प्रॉपर, उनको एक ग्रुप्स बनाते हैं और दे पॉलिश देम, दे गिव देम मैनेजर्स. दैट कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ लाइक यू नो BTS एंड ऑल दैट, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल गेम है. बहुत क्रेजी है वो. इवन टू अप्लाई एंड क्वालिफाई फॉर दैट इज अ craziest thing. But I think over here it's just do what you have to do with what you have. ठीक है. It doesn't matter कि यार मैं प्रो कंप्लेन करने को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कंप्लेन कर सकता था. मेरे पास डांस स्टूडियो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये मिरर्स, स्पीकर्स, ये वो. पर ब्रो हमने ज़िंदगी में हर जगह नाच लिया है. We've danced on the biggest stages, सड़कों पे, पत्थरों पे, पानी पे, मट्टी पे, सब कुछ कर दिया, उधेड़ दिया. तो वही है कि मेक मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव और बस करो. एज लॉन्ग एज नियत साफ है और आपका विजन क्लियर है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट फकिंग गो फॉर इट. बिल्कुल जबरदस्त बात है. दैट्स व्हाट अ लीडर डज. जैसे लीडरशिप क्वालिटी, इट्स अ लीडरशिप क्वालिटी. लीडर वेरी इजी टू डिफाइन. जो बंदा तैशी विजन बना रहे कुछ रास्ते, कुछ लोग पीछे हैं, ही इज हसलिंग. एज अ मैनेजर you have to face. Man, I try, because Anarchy, and there's always this one thing that Anarchy used to say, which I believe we can do it, कि we never wanted to do it more for ourselves. वो तो अब जाके हमने थोड़ा बोला है कि we, you know, हमें अपने लिए करना है, because if we sort ourselves out first, then only we can sort others out, right? और मेरी mentality ये है कि all my real ones, you know, even if I don't talk to them every day, मेरे back of the mind मुझे पता है कि यार there are people that I came up with who are part of my hustle, so the day I fucking make it, everyone wins with me. समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी पता है कि अभी तक टिल दिस डे, इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन पास ऑन टू अदर पीपल, यू नो, आई डू इट. कि हाँ भाई यार ये तुम्हारे लिए फिट है, इससे बात कर लो, ये बात कर लो, सही है. तो वी ऑलवेज लाइक Anarchy was like even if we don't make it in our lives, you know, in this era for ourselves, at least we do something that the people can follow. कि यार ये footsteps follow करें और we can go here and, you know, get this thing sorted out and, you know, create a platform and something like that. And I think we already done that with the jams as well. तो माशाल्लाह, I won't lie, to be honest. मैं बिल्कुल सही बात करूँगा. Like, you know, when the Anarchy started, you know, started doing jams, सही है. और फिर उसके बाद then EXG came with that. It was the same formula that every put in, and, you know, he just Tashin just showed us how to make a meal, right? So we all did make a meal, and then we had a buffet. तभी सबके पेट भरे. नहीं, that was humbling, bro, humbling. नहीं यार, it's amazing. So you guys have the brainchild. You guys are like the one behind the brainchild of hip hop jams in Pakistan. It's amazing. Moving forward, Asad, do you have any other questions? Yeah, please let us, your viewers, because you got potential audience. People are, you got guys to follow. आपको idolize करते हैं लोग. बिल्कुल idolize करते हैं आप. You have inspired many girls and boys to dance and to just pave their way. There's a chance, there's a hope, there's a way. You can just make it out. So, well, the legit question, what advice you gonna give to your people that brothers ये काम करो, ये नहीं करो, you to the young b-boys, to the young hustlers out there looking at you right now? Few things. So, you know, always remember where you came from. You know, always respect, you know, the people you came up with. It could be your family. जैसे कि even in my dance life, in my early dance life, there are people that I started dancing with, but over the years, मेरी बात नहीं होती. You know, we have our differences, but I still respect them to this day. सही है. ठीक है. They're always, you know, someone to look up to. Always be open, you know, to accept help and ask for help. मतलब अकेले तो bro तुम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते. मतलब I'm a very, you know, at times a very proudful person and a proudy person कि I cannot easily ask for help. मेरी मतलब
वो है ना पाकिस्तान में मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं होता, you know, सब कुछ कर लूँगा, तो वो वाली मेंटालिटी है लाइक सोसाइटी में. अगर तुम उस पर्सपेक्टिव से बात करो तो ये वाली मेंटालिटी है कि हम वी मेन आर लाइक यू नो मैं स्ट्रॉन्ग, यू नो सख्त आदमी, तो डोंट बी दैट, यू नो डोंट बी दैट सख्त. नहीं कसम से. अच्छा एक और ये सीन था, एक मजे की बात है. अच्छा आई हैड दैट सेम पर्सनालिटी, देन मुझे फील है कि हाउ कैन आई आस्क फॉर हेल्प. वही दिमाग में है ही नहीं सवाल. अच्छा आई एम गोइंग ब्लैंक एट दैट. सब कैसे क्या करूँ, किसको पूछूं, क्योंकि कुछ याद ही नहीं, मतलब कौन क्या करता है, किस वक्त पे कनेक्शन होता है दिमाग में आता है कि यार मे बी दिस गाय कैन हेल्प मी, राइट. तो एक बात है कि लाइक यू नो मे बी जस्ट आस्किंग ब्रो, जस्ट फॉर मी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, जस्ट आस्किंग फॉर हेल्प कि हे कैन यू प्लीज डू दिस और कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट. ब्रो मैं काम पर होता था कि मैं कैसे पूछूं, मेरी बॉडी अलग, बिकॉज we've grown up in a society like that, right? कि वो हमें फेंक दिया जाता है दुकान पे कि बस दुनिया में जाओ और देख लो, बस अपनी रास्ता खुद ढूंढो, right? तो in that regards, I mean, there's so many things in life that you're not taught about. बिल्कुल, I totally agree. Asking for help, being open and accepting to it, and then being true to yourself. Like finding inspiration in others is easy. मतलब सब कोई करता है कि यार ये बंदा अच्छा कर रहा है, ये बंदी अच्छी कर रही है, but always look on the inside. You know, कि who you actually are. You start with an inspiration and चलो कुछ time तुमने inspiration follow की and then find your own way. Exactly. And just don't have any excuses. मतलब I've been people around me, you know, not just talking about myself, people around me have gone through the worst of shit and they're still, you know, out there making moves and still doing what they do. Yeah, I think it's about that. So just start with it. Believe in yourself, even if no one else believes in you. Believe in yourself. Look out for yourself. Look out for your people. Respect your people, and just you know do it with all your heart. बिल्कुल सही बात है यार. यही. बहुत beautiful. जबरदस्त यार. तो भाई मेरे पास तो कोई सवाल नहीं बचा. आई थिंक ब्रो दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी. इसके बाद मैं नहीं आऊंगा, मैं बस ऑटोपिया देता रहूंगा तुम लोगों को. ये सब मार के बुलाऊंगा. डन खाना खाएंगे हम लोग. यस सर. तो आई थिंक दैट्स ऑल गुड, और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एज वेल. एंड थैंक यू सो मच तैशी, Khudaish भाई. Khudaish का नाम असली. So thank you for having me. Yes. Last but not the least, please share your experience with EncycloMedia Hub or the podcast session. How you're feeling right now to be here? Just a review of EncycloMedia. They're good. They took some good care of me, man. मुझे मैंने बोला था को मैं खुद नहीं आऊँगा था, ये लोग लेने आए, इन्होंने मुझे बर्गर खिलाया यहाँ पे बैठ के. फिर यहाँ पे साइबर इम्तियाज भी आ गए तो उनके साथ भी सेशन लगा. मतलब मजेदार. You should definitely come through Encyclopedia. And bro, honestly, like you know, मेरे से बात हटा के like congratulations on you know this venture. Thank you so much. It gives people hope. Like in तुम्हें पता है कि आजकल हालात कैसे चल रहे हैं, and this is something मैंने पॉडकास्ट में बहुत बार बोला है, because this is something which you're living in. मतलब if I थोड़ी सी और अगर लंबी करूँ एक बात है, मैं बोलूँ कि in a city like ours, it's not easy to be an artist. You know why? Because you always are worried about के हालात कैसे हैं, then you have to get out and work and you know do odd things, and even when you focus on your art possibilities and बहुत सारे hurdles हैं, तो आपके दिमाग में ना बहुत मतलब दुनिया भर में लोग full time artist हैं, but for us to have the lifestyle inshallah ho jaye, but it's difficult, right? So when I see things like these and you know good events happening and you know good entrepreneurs and startups or people doing their own thing, एक hope मिलती है कि नहीं यार यहाँ पे कुछ चल रहा है, and there's still something to look forward to, like you know something positive in amidst all the negativity around us. नहीं ज़बरदस्त, बहुत different, एक बिल्कुल ज़रूरी है. I'm glad and we are glad that you know you guys doing it, Anarchy is doing it just for the sake, for the you know for the love. Yes sir. So this is all you know from our side. It was amazing having Taishi on our show. And Asad, would you like to close the show for us? बहुत अच्छा लगा. And Taishi, thank you so much for your time. आप आए और we had a great good conversation talking about. बस चेक भिजवा देना मेरा. That's amazing having you on board, and what a great good session. Thank you man. Thank you so much for having me. Thank you for the love. Thank you so much for joining in. Stay tuned. और बहुत अच्छा लगा ये virtual connection आप लोगों से हम बना रहे हैं. So guys, stay tuned, stay connected with the vibe, and inshallah. अता भाई क्या कहना चाहेंगे? With the new guest next time, and see you guys soon. Allah Hafiz. Take care.